हेलो 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 वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड उप्स नहीं यार वेलकम टू ऑल माइटी ब्लूज एफसी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों भाई हर चीज आजकल मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक हो रही है यस लास्ट 3-4 हफ्तों से दिख रहा था एवरीथिंग इज गेटिंग लिंक टू चेल्सी इन बार्सिलोना पर अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड आर राइट इन द मिक्स एब्सोल्युटली और यार तीनों ही क्लब्स के बारे में बात करेंगे बट मैन सिटी एज वेल एंड इवन लिटिल बिट ऑफ आर्सेनल एंड टॉटनहम तो भाई सब लोग लाइक कर दीजिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब yes we are back live after a while तो hopefully we get all the support हाँ algorithm थोड़ा better करना है उतना ही नहीं यार I thought of doing a video and then releasing it but again आप लोगों को ज्यादा पसंद है when I come live supposedly for whatever reason yes I don't know आप make out कर सकते हो I'm not 100% लेकिन definitely भाई when it comes to breaking news हम तो आते हैं भाई live तो आने ही है और discussion करना है नहीं तो यार it will not be fair right तो again big up भाई सब लोगों को पहले let me big up the people who have joined me live of course means a lot to me and of course बाकी लोग भी यार जो भी live जुड़े हैं let me know in the comments आपको क्या लगता है based on the description and title as well as the poll football creeks yes इसके बारे में बात करेंगे like I mentioned the title and like I said everyone please join our discord server as well हाँ like तो करिए stream likes काफी कम हो रहे हैं भाई आजकल कम likes करिए खाली मेरे लिए नहीं हर एक स्ट्रीमर के लिए लेकिन yes definitely FPL भी join करिए because I have to react on that towards the end absolutely मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्ट इन ओबामेयांग भाई मतलब वही है चेल्सी बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड या तीनों को एक तीसरे से जुदा नहीं कर सकते वेल अगेन कॉन्ट्रास्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर इंग्लिश मीडिया एंड स्पेनिश मीडिया सपोजिटली जेरार्ड रोमेरो ही लेकिन हाँ उन दोनों के बीच में लड़ाई अभी तक जारी है तो हम उसके बारे में बात करेंगे एब्सोल्युटली जैसे यहाँ पर दिख रहा है फुटबॉल का सोर्स अलग ही बोल रहा है एंड यस दिव्यांशु बोल रहे हैं भाई यू गाइस हैवंट लर्नड स्पेनिश मीडिया इज ऑलवेज राइट लेकिन हाँ मेरे पास एक दो एग्जांपल्स हैं जहां पर इवन दे वरंट राइट दिव्यांशु लेकिन हाँ आई एग्री दैट ज्यादातर वो करेक्ट हुए समर ओ भाई साहब कोई नहीं मैन मुदित इन द हाउस थैंक्स फॉर जॉइनिंग ब्रो एज ऑलवेज एंड यस दिस इज द न्यूज व्हाई और हाँ काफी सारे न्यूज आए भाई बिग अप टू डेविड एज वेल एंड आई कैन सी परवीन इन द हाउस यार देखिए सबसे पहले न्यूज होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर लड़ाई छड़ गई प्रॉपर लड़ाई छड़ गई है वो है अबाउट बर्नार्डो सिल्वा देखिए यार बर्नार्डो सिल्वा का स्टांस क्लियर है द गाय वांट्स टू गो टू बार्सिलोना गिवन अ चॉइस ही वांट्स टू गो टू बार्सिलोना उनका है ड्रीम क्लब और उसको लगा है बेबी ही इज अचीव्ड इनफ इन सिटी एंड मे बी सिटी एंड मैन सिटी आर इन द सेम लेवल राइट नाउ टू मे बी ट्राई फॉर यूरोप आई डोंट नो आई डिसएग्री लेकिन अगेन बर्नार्डो सिल्वा थिंक्स लाइक दैट चलो दैट इज हिज स्टांस व्हाट इज पेप गार्डियोला स्टांस पेप गार्डियोला स्टांस है कि भाई डेफिनेटली इफ अगर प्लेयर जाना चाह रहे हैं तो आई वोंट बी इन हिज वे तो पेप गार्डियोला इज ओके लेकिन मैन सिटी की बोर्ड भी एक चीज बोल रही है मैन सिटी की बोर्ड क्या बोल रही है while बार्सिलोना बोल रहे थे भाई अबाउट 55 million एक्सेट्रा वी आर वांटिंग एटलीस्ट 75 million वो है स्टांस बार्सिलोना ऑन अदर हैंड अगर दे वर एबल टू गेट rid of फ्रैंकी डी योंग देन नो टू वेज अबाउट इट तब तो बर्नार्डो सिल्वा 100% जाता मैं लिखकर बोलता हूँ लेकिन फ्रैंकी डी योंग का भी क्या हो गया लास्ट आई थिंक 24 घंटों में एक रिपोर्ट आई है एंड आई हैव एक्चुअली हर्ड द जर्नलिस्ट सेइंग दैट नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज एक्चुअली विथड्रॉन देयर ऑफर जो फ्रैंकी डी योंग का था बिकॉज एक डेडलाइन थी एंड वी हैव विथड्रॉन यस देयर इज अ वे दैट वापस से इंटरेस्ट हो सकता है अगर stance of Frenkie and Barca changes Barca तो खैर they were already agreeing to sell Frenkie लेकिन stance of Frenkie changes then maybe they can come back with a new bid again right with the same bid another time लेकिन अभी के लिए withdraw कर दिए whereas Mr. Fabrizio Romano ने बोला है भाई कुछ चेंज नहीं हुआ है it is all down to Frenkie de Jong or things change as it is Barca and Manchester United have agreed at fee और Chelsea are in the waiting वही है लेकिन वही है ना अगर वो 75 मिलियन नहीं मिलते बारसा तो बारसा कैसे पे करेगी फॉर बर्नार्डो सिल्वा यस यू कैन सी द फोर्थ लीवर इज एक्टिवेटेड लेकिन यार देखियो यार दिव्यांशु और सब लोग जो बारसा फैंस है स्पेशली है लेट मी एक्सप्लेन बेसिक मैथ्स यार जब आप गिरवी रखते हो जब आप बेचते हो ना यू डोंट वांट टू पुट 100% ऑफ योर एसेट्स अनलेस आपको एकदम डेस्परेशन है डेस्परेशन क्यों नहीं है मैं बोलता हूँ यस बर्नार्डो सिल्वा 100% एलिवेट करेगा आपका लेवल देयर इज नो टू वेज अबाउट इट लेकिन don't you have a Gavi don't you have a Pedri don't you have a Frenkie de Jong अगर नहीं जाते हैं don't you have a Kessie is a new player remember हाँ you bought him on a fee on a free लेकिन फिर भी यार he is that player plus Sergio Busquets है I know Nico is gone now but still we are talking about players जो शुरू कर सकते हैं ना तो I think these are all starters for you how will you manage I really doubt it yes he can start on the wing as well Bernardo आप बोल सकते हो लेकिन again आपके पास दो left footed wingers हैं in Dembele and Rafinha
तो आई डोंट थिंक वहां पर, और आंसू फाटी और फरहान टोरेस ऑन अदर साइड, हाँ अगर आप ओबामियांग को भी जाने देते हो देन देयर इज मे बी अ चांस, अगर डिपाई ओबामियांग दोनों जाते हैं, बट देन कमिंग बैक टू दैट अगेन, यू माइट अग्री विद मी यहाँ पर, लेकिन रियलिटी माइट बी डिफरेंट। यहाँ पर लॉजिक में अपना रहा हूँ। लॉजिक क्या है, देखिए, just for Barca fans in particular, yes, we'll come to Chelsea and Manchester United quickly, and of course Man City. लेकिन अगेन इट्स रिलेटेड टू मैन सिटी ऑलरेडी। देखिए अगर ओबामियांग निकल जाते हैं, यस 30 मिलियन यूरोस काफी पैसे होते हैं, एंड दैट विल हेल्प इन अ वे टू काइंड ऑफ बाय बर्नार्डो, ठीक है, टू बैलेंस द बुक्स। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार, इट इज आल्सो अबाउट द वेज कैप। डू वोंट यू हैव एन एक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स मोर देन व्हाट यू नीड एट दैट वेज कैप? और ओबामियांग अगर चल जाते हैं, then Depay is already leaving, वो तो is kind of known, ठीक है, to Juventus. Then you have only maybe Ferran Torres at best who can play the striker after Lewandowski. तो by chance अगर हो जाता है Lewandowski को इंजरी, by chance, again obviously I don't wish it, लेकिन by chance अगर हो जाता है, don't you think it is a major issue? ऐसे as it is you are saying that Real Madrid maybe यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज दे रही है to Benzema, they don't have the backup striker. यहाँ पर अगर हो सेम चीज हो जाता है तो why, what about that? मतलब I don't think बार्सिलोना को चाहिए, दैट इज माय ओपिनियन, एंड दैट इज व्हाई मुझे लग रहा है ऑल्सो रिपोर्ट सेइंग दैट बर्नार्डो जो लास्ट महीने आ रहा था, ही इज बॉट अ हाउस इन बार्सा, नाउ ही इज बॉट अ हाउस इन मैन सिटी। अब पता नहीं क्या सच है भाई, मतलब गोइंग बाय रीसेंट रिपोर्ट लग रहा है ही माइट जस्ट स्टे बिकॉज ऑफ फ्रैंकी डे जॉन्ग स्टेइंग इन बार्सिलोना, वही मेरा है। और अगेन ओबामियांग as much as Chelsea are very interested, यार लग रहा है डिफिकल्ट है, 30 million euros not a lot of money, लेकिन आई थिंक इट इज फॉर 33-year-old, लेट्स बी ऑनेस्ट, स्पेशली ओबामियांग जो बैगेज भी लाते हैं, माय ओपिनियन। हाय भैया बिप्रा, यस, एंड वही पर रोनाल्डो की भी बात करेंगे बिकॉज इट्स रिलेटेड टू चेल्सी स्ट्राइकर्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। बिप्रा इन द हाउस, यस, आर्सेनल की बातें करेंगे। वाओ, एथलेटिक का tier 1, लेट्स सी। वाओ, आई डोंट थिंक सो, मतलब अगेन मैं इतना बोलूंगा, दिव्यांशु, यू नो, फुटबॉल क्रिक्स, परवीन, एवरीवन, एवरीवन द हाउस जो कमेंट कर रहे हैं ना, देखिए भाई, none of the journalists are 100% reliable, that's a fact. Even Fabrizio Romano has proven that he's not 100% reliable, because at the end of the day they are not the player or the manager themselves, ठीक है, and they are not the club president themselves. So I think those are the three best reliable sources. लेकिन हाँ, again there will be certain news which might change, because transfer news वो है, transfer news का kind of, that's the quality of transfer news, right? That is the quality of transfer. आप सोचिए, अगर आप basically want to go to a certain club and you change your mind in the last moment, things can change, and that's what happens. Won't be assured until Gerard Romero confirms it. I am a City fan and pray for Bernardo to stay every day, every minute. Okay, wow, Manav, big up, bye. By the way, yes, people who do not know, yes, we are live for after what, a couple of days. So किसी को याद नहीं तो बता देते वापस से, we are monetized on both the channels, yes, but again it'll help if you kind of contribute, be it with membership or be it with super chats or super thanks to videos as well, to shorter videos as well, आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, the idea is the investment जो आप कर रहे हो definitely will go back in the development of the channel, ठीक है, it's not going to my pocket. I don't understand why Tuchel don't want Cristiano Ronaldo to be here, that is my biggest question, और इसलिए मैं बोलता हूँ that is remaining। और यहाँ पर मानव बोल रहे हैं Bernardo dream club is Barca, no second thought, but it isn't like he's hell bent to go there as now. He would love a move, but he's content with his role at City. Okay, he's content with that. Casemiro United नहीं, मैं weak. और again people, the reason certain news might be repeating from last night is because यार मैंने किया था एक live stream on Almighty Sports Plus, वहां पर भी आ जाओ भाई सब लोग, we discuss a lot of transfers वहां पर भी every alternate day, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था, डेफिनेटली नो यार, मतलब इट्स ऑलमोस्ट फनी टू मी द फैक्ट दैट फ्रेंकी नहीं आ रहा है अभी के लिए, तो गो फॉर कैसेमीरो। हाँ, मतलब रियली, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, कैसेमीरो इज अ मच बेटर प्लेयर देन फ्रेंकी राइट नाउ एज थिंग्स स्टैंड। यस, डिफरेंट प्लेयर्स टोटली, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जस्ट द प्लेयर वैल्यू आई वुड से कैसेमीरो इज मच बेटर। सिटी वोंट बी एबल टू कीप सिल्वा दिस सीजन एंड हिज अराइवल टू बार्सा इज इमिनेंट। दिव्यांशु इज वेरी कॉन्फिडेंट। भाई एक चीज होता है कॉन्फिडेंस है, एक होता है ब्लाइंड फेथ। मतलब मैं थोड़ा, मतलब आई नो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स दिव्यांशु एंड नॉट Barca fans, I'm telling you, there will be a point that all this thing might backfire. सब चीज है आपका 100% hit नहीं होगा. That is why I strongly recommend Barcelona and Barcelona fans to kind of hold it. Why? Because all these transfers here cannot be 100% success. I'll tell you, that's a fact. वो होता है, that is the nature of the transfer window. ठीक है, बट अगेन दे हैव डन मैडनेस, आई एग्री विद दैट एज वेल। इन ट्रांसफर विंडो बढ़िया काम किया है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। प्रियांश इन हाउस, प्रियांश कैसे हो भाई? देन हु विल सिटी साइन एज रिप्लेसमेंट ऑफ सिल्वा? आई डोंट थिंक सिटी विल लेट गो द इंपॉर्टेंट प्लेयर। एज अ चेल्सी फैन, लेट मी सी,
that okay, true City fan in the house, big up bro, I hope you're well. And yes, of course, you know what, let's plan a stream. What do you think? We'll plan a stream. People do check out True City fan, and we'll plan a stream soon. He has been in the channel before as well, and hopefully we'll have those talks again. I know City are playing Barcelona next week, so that's going to be interesting and friendly though. But before that, we'll do a stream for sure. True City fan, big up bro, definitely. अगेन यहाँ पर इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ बिकॉज यार 3 दिन हो गए जब तक मैं लाइव नहीं आया हूँ, तो आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर माय ओपिनियन यू गाइस. आई होप दैट्स फेयर, राइट? एनीवे, I love every content creator out there. Much love to True City fan, of course, right? Silva, an important player, and Pep doesn't even start with him. Okay, यहाँ पर घंटी बज रही है 2-3 बार. लग रहे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा that I am talking about City and Barca too much. कोई नहीं. You know what? We'll come back to that. The fact is, quickly, देखिए, एक और है रोनाल्डो ही अभी न्यूज में है. द रीजन बीइंग दैट देयर हैज बीन मैडनेस व्हिच हैज हैपेंड. अब क्या मैडनेस हुआ है फॉर पीपल आउट देयर हु डू नॉट नो. आई नो, मैं भी यार कल व्हेन आई वाज काइंड ऑफ रीडिंग दिस, आई वाज एक्चुअली लाइव ऑन अनदर स्ट्रीम ऑन फीफा ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. तो मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ रोनाल्डो का पोस्ट व्हिच इज काइंड ऑफ क्रिप्टिक. वापस से क्रिप्टिक मैसेज है, तो आप पर निर्भर है आप क्या सोचते हो इसके बारे में. देखिए यार, रोनाल्डो ने बोला है, यस विल कम टू सिटी एंड बार्सा स्पेशली, बट रोनाल्डो ने बोला है they know the truth when they interview in a couple of weeks. The media is telling lies. I have a notebook, and in the last few months of the 100 news I made, only 5 were right. Imagine how it is. Stick with that tip. Okay, so basically ये कब आया था और क्यों आया था? This came in response to again a cryptic post by a so-called journalist who is knowing Cristiano Ronaldo. वो अपने साथ आई थिंक तस्वीरें खींचे थे रोनाल्डो के साथ, एंड ही हैड पोस्टेड दैट along with that a big message in Spanish if I'm not wrong, or Portuguese, I'm not sure. तो वहां पर वो बोल रहे थे about his move to Atletico Madrid, which is still on in his opinion. In my opinion, Atletico Madrid तो definitely नहीं होने वाला. There's no two ways about it. I've called it. Atletico Madrid, Real Madrid, Bayern Munich are out of the question. यहाँ पर only possibility is अगर Chelsea interested है and we really tempt Cristiano Ronaldo, maybe, just maybe, because of George Mendes, then maybe Dortmund, because Dortmund still need that replacement for Haller for this season at least, or basically go back to Sporting Lisbon. ये है अभी के reality, सच में बोल रहा हूँ. तो बाकी I don't think it's going to happen, but anyway, आप लोग क्या बोलते हो बता देना. What is the meaning of this? The truth in a couple of weeks means, भाई basically मैं move करके बताऊंगा directly, is what it's saying. That is what I understand. वेल अगेन दानिश आएंगे उस पर. दानिश बिग अप ब्रो, मैं स्टार कर रहा हूँ बाय द वे फ्रेंकी एंड बर्नार्डो वाला. एंड हेलो टू सूरज एज वेल ब्रो, अगेन चेल्सी फैन द हाउस. सूरज क्या लगता है भाई, डू यू थिंक चेल्सी विल चेंज द माइंड कंसीडरिंग द 30 मिलियन यूरो से कम नहीं कर रही बार्सिलोना फॉर ओबामेयांग? डू यू थिंक वी विल चेंज द स्टांस? और हाँ, ज़ाहा में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे चेल्सी, तो लुक्स लाइक वील गो फॉर अ प्रॉपर स्ट्राइकर, और रोनाल्डो पे टेम्प्ट हो जाएंगे लास्ट में. टॉड बर्ली लास्ट 24 आवर्स में थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड है. देयर वर रिपोर्ट्स, होपफुली ही कन्विंसेस टुकल फॉर माय सेक, आई डोंट नो, क्योंकि हमें चाहिए एक पोचर यार. देखिए यहाँ पर इतना क्रॉसिंग जो गेम खेल रही है चेल्सी, ओनली रोनाल्डो कैन पुट देम इन. ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट. ऑफ कोर्स यू वोंट एक्सपेक्ट 30 गोल्स, लेकिन भाई 20 गोल्स इज मोर देन इनफ, एंड दैट्स व्हाट रोनाल्डो विल ब्रिंग फॉर यू इन चेल्सीज प्ले एज वेल. Bhaiya, do you think we should let the likes of Pulisic and Ziyech go as well? Then who will be our attacking substitutes? See, that is the point. Again, United abhi yaar unko, they are feeling that they might just lose Ronaldo, maybe, or journalists are feeling that. इसलिए थोड़ा इतना सारा स्टोरीज आ रहे हैं. Ziyech to United, Gakpo to United, Pulisic to United on loan, वो शुरू हो गया भाई. In my opinion, we won't lose Ziyech and Pulisic. Remember, we have already lost a Timo Werner and Lukaku. Yes, Lukaku कुछ नहीं किया था भाई, but technically he was highest goal scorer for Chelsea last season. Werner, well, in Champions League in the last 2 seasons, he's the highest goal scorer for us. So we have lost 2 goal scorers in major competitions, the major competitions. So do you think we will also lose more forward line players? Because Tuchel doesn't consider them as wingers. He considers them as forward. ये कैसा proof है? स्टर्लिंग से प्रूफ है. स्टर्लिंग के लिए बोला था उन्होंने भी, ही इज द बेस्ट इन द फ्रंट 3, ही इज द बेस्ट इन द लास्ट लाइन ऑफ फॉरवर्ड. तो दैट इज व्हाट ही सीज दैट. तो मुझे लगता है पुलिसिक एंड Ziyech both should stay. That is what I want. लेकिन what I really think might happen is that Ziyech might eventually move to Milan. Talking about Milan, I think Chelsea expect कर रही है better offer, और Ziyech भी.
मिलान आई नो दे हैव कपल ऑफ राइट साइडेड प्लेयर्स, बट वो लोग सेंट्रल भी खेल सकते हैं. Ziyech कैन प्ले बोथ एज वेल. तो Ziyech वहां पर अपग्रेड करेगा. यस, दे गॉट अ ब्रिलियंट विक्ट्री द वीकेंड, बट फिर भी आई थिंक शाश्वता, आई थिंक दैट Ziyech to Milan looks more likely that right now than a Man United. I think Gakpo ज्यादा suited है, as much as they need a Ziyech more. थोड़ा जो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन प्रीमियर लीग में उन्होंने उखाड़ा कुछ नहीं है. So I think it's better that Ziyech goes to AC Milan for my sake. Not that I'm also a Milan supporter, but I'm just saying. मिलान ने किया था आई थिंक 25 मिलियन नहीं 20 मिलियन यूरोस का बिड, उसमें लेकिन 5 मिलियन अपफ्रंट खाली. तो दैट वाज द इश्यू. चेल्सी को चाहिए अपफ्रंट 75% पेमेंट. वो हो जाएगा मेरे ख्याल से. उनके पास है पैसे, 15 मिलियन यूरोस है एज पर रिपोर्ट्स. I'm being following football and consider Athletic as reliable Athletic, as there can be contradictory reports, but I know Athletic reports why turn opposite. Okay, Frenkie de Jong Bernardo swap, no, yeah, swap तो नहीं लग रहा अभी. And yes, people, come on, let's get to 100 likes at least. We can certainly get to 100 likes easily, भाई. मतलब come on, ज्यादा likes हो तो ज्यादा YouTube बताएगा, algorithm वैसे ही है. ओके चलो कोई नहीं. अरे भाई मैं आई नो आज दाढ़ी नहीं किया हूं तो क्या बोलूं मैं ऑडली. वी विल सी अबाउट इट ऑन 1 सितंबर. ओके, तो यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं फुटबॉल फ्रीक्स विद दिव्यांशु. ओके, यहाँ पर मजा आ रहा है मुझे तो एज न्यूट्रल. बट एनीवे, हाउ मेनी मोर प्लेयर्स डू बार्सा नीड टू फिनिश सेकंड? किंग कार्लो इज नॉट गुड, लेट देम फिनिश फर्स्ट. वाओ, दैट इज अनदर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट. दानिश, मुझे लग रहा है इन द लीग, आई हैव कॉल्ड इट, बार्सिलोना शुड बी फेवरेट्स. दैट इज व्हाट. अगर वो नहीं जीत पाई लीग, बिकॉज चैंपियंस लीग तो लेट्स बी ऑनेस्ट वेरी वेरी ब्लीक चांसेस लग रहे हैं. हाँ, एट बेस्ट आई थिंक वो सेमीज तक जा सकती है एट बेस्ट. I don't see them going beyond. Also depends on a lot of on the draws and luck, injuries and all that to दूसरे teams also. लेकिन लीग उन्हें जीतना ही है. That is the high risk they've taken. इसलिए मैं आता हूँ back to the Barca fans. I don't think that you should go for every transfer. अगर मतलब it's not FIFA. मैंने जो FIFA में किया कल रात को वो मत करिए. It is a very very high risk kind of a situation for you. Even Brighton Twitter handle is not reliable. सूरज इज नाइस वन यहाँ पर. भाई यूनाइटेड विल सबमिट ऑफर ऑफ कैसेमीरो 80 मिलियन. ओ माय गॉड यार, सबमिट कर देगी होमलैंडर, बट आई डोंट थिंक आने वाले यार. लेट्स बी ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड भाई, दे हैव नॉट गॉट आई थिंक चुआमेनी टू काइंड ऑफ लेट गो कैसेमीरो. वो नहीं लग रहा है मुझे. ओके, डेरिन द हाउस भाई, मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑफ कोर्स. ट्रेवर चालोबा माइट लीव चेल्सी ऑन लोन. योर थॉट्स? नहीं यार, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेंगे. वाई, मतलब आई नो काफी सारे स्टोरीज आ रहे हैं, मे बी चेल्सी को कम करने हैं प्लेयर्स ऑन द बुक्स. दैट इज द रियल फैक्टर. ठीक है, तभी हम खरीद पाएंगे. लेकिन नॉट ट्रेवर चालोबा. ट्रेवर चालोबा इज समवन हु हैज प्रीमियरशिप एक्सपीरियंस अभी. यस, ही इज नॉट योर स्टार्टर, बट ही इज अ फोर्थ चॉइस सेंटर बैक, और उन्हें वही रहने दे. आई थिंक ही इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ फोर्थ चॉइस सेंटर बैक इन द मार्केट, तो हाँ, अगर कुंडे आते हैं फॉर मी, ही कुड हैव बीन द थर्ड और फोर्थ चॉइस सेंटर बैक, लेकिन वो नहीं आ रहे, तो इसलिए ट्रेवर चालोबा चेज. एंड यस पीपल, लेट्स गेट टू द लाइक्स. ऑफ कोर्स Casemiro transfer could be perfect for United, but it's unrealistic. Unrealistic बोल रहे हैं. Okay, 100% unrealistic. अरे सादिक भाई, man, सादिक भाई, no problem man. सादिक भाई, all good. And yes, सादिक भाई, सब लोग वेट कर रहे हैं आपके हुए मैं का. कल मैसेजेस आ रहे थे मुझे, तो मैंने बोला है इस बार वेंसडे नहीं होकर फ्राइडे है. तो यस पीपल, दिस इज अ क्विक अनाउंसमेंट. एज ऑफ नाउ इट इज प्लान्ड फॉर फ्राइडे इवनिंग. तो सब लोग मार्क कर दीजिए कैलेंडर, अभी फ्राइडे इवनिंग इस परसों को वी आर हैविंग अ हु एम आई क्वार्टर फाइनल. दैट इज सादिक भाई वर्सेस सूरज. बिल्कुल बिल्कुल. Okay, why don't you flash GP or Paytm as it will save money which YouTube gets from super chat? अरे लेकिन वही ना, even that kind of matters to me. मतलब for me it's better to get via YouTube than that. I'll explain you in detail when you DM me, bro. Don't worry about that. प्रतीक, जेरार्ड रोमेरो, मतलब वही है ना, यहाँ पर लिटरली लड़ाई चल रही दोनों में, और कुछ नहीं चल रही. अगले का यूनाइटेड कोई प्लेयर ले पाएगी? वेल, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन. देखिए भाई, यूनाइटेड हैव गॉटन रिड ऑफ व्हाट 7 to 8 प्लेयर्स एंड दे हैव साइंड ओनली व्हाट 3 प्लेयर्स. उसमें भी आर्ग्यूबली ओनली वन शुड स्टार्ट. लिसांड्रो मार्टिनेज इन माय व्यू शुड नॉट स्टार्ट. यस, आई थिंक काफी लोगों ने बोला है भाई, यू डोंट जज प्लेयर्स वेरी अर्ली एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाई प्रोफाइल नेम्स. But he's not suited for center half in a back four. That's a reality. Back three में maybe and maybe a CDM, but not a center half. So unless he moves to CDM, I don't think he can stay there, especially against Brentford जो हुआ था after that. अरे nice प्रकाश, thanks यार. सिटी वोंट लेट बर्नार्डो लीव विदाउट फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट. चलो यहाँ पर थोड़ा चेल्सी ऐड डाल देते हैं, और हाँ, हम आएंगे और भी चेल्सी स्टोरीज में. ऑफ कोर्स ब्रेकिंग न्यूज अबाउट न्यू चेल्सी साइनिंग जो मैंने रिएक्ट नहीं किया इन डिटेल, एंड ऑफ कोर्स अबाउट एलॉन मस्क, व्हाट इज
समवेयर इन बिटवीन द लाइंस हम आएंगे उस पर। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा एज अ चेल्सी फैन मैं बोल देता हूँ यहाँ पर क्विकली, मैं तो चाहता हूँ भाई, ऑल बारसा फैंस मेरे से नाखुश मत हो, मैं तो चाहता हूँ कि बर्नार्डो सिल्वा जाए बार्सिलोना। यस, उसमें हो सकता है बार्सिलोना सुपर पावर बन जाए वापस से, जो ऑलमोस्ट बन ही रही है लग रहा है। लेकिन फॉर मी मेन चीज इस बार क्या है भाई, प्रीमियर लीग में चैलेंज करना है। हाँ, आई डोंट वांट अ फार्मर्स लीग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एज मच एज सिटी फैंस वोंट लाइक मी सेइंग इट, हाँ आई एम अ न्यूट्रल, बट आई एम अ चेल्सी फैन आल्सो, राइट? तो यार चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांट बर्नार्डो सिल्वा लीविंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई नया आएगा और रिप्लेस कर पाएगा। यस, गुंडोगन इज सुपर्ब, ही स्टार्ट्स, फोर्डन कैन प्ले इन मिडफील्ड, डेफिनेटली यार दे वेल कवर्ड, नो टू वेज अबाउट इट। मेबी और 4 डबल पिवट खेलेंगे विद कैल्विन फिलिप्स बीइंग देयर, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। पेप नोज हिज टैक्टिक्स इनसाइड आउट मच बेटर देन मोस्ट ऑफ अस, राइट? लेकिन भाई फार्मर्स लीग नहीं चाहिए, तो वही है, एक इंजरी और दे आर थिन। और हाँ, नया प्लेयर डेफिनेटली आएगा, लुक्स लाइक पकेटा माइट कम, बट अगेन इट्स टू लेट इन द ट्रांसफर विंडो इवन फॉर देम, तो यार मुझे नहीं लगता देयर माइट बी एनी मूवमेंट। वही रीजन है, फ्रेंकी माइट जस्ट स्टे इन बारसा, बर्नार्डो माइट स्टे इन मैन सिटी, एज मच एज आई वुड लाइक द अदर वे अराउंड। Okay, pep talk in the house. Thanks for joining, bro. And of course, like the stream people, definitely. अरे भाई, यूनाइटेड रोड इन द हाउस, भाई आपको मैसेज किया था, बिजी हो लगता है, एक सेकंड देखते क्या किया था। चलो कोई नहीं यार, बाहर है अंशुमन, मैं को पूछा था अगर वो ज्वाइन कर सके, बिकॉज यूनाइटेड के बारे में काफी आज बात करें। कोई नहीं अंशुमन, जल्दी मिलेंगे यार। आई नो बार्सिलोना डन ट्रांसफर मार्केट, बट दिस इज नॉट लीड, सेविया और स्ट्रगलिंग चेल्सी, दिस इज सिटी and prices cannot be, oh my god, oh आज तो वही हो जाए, जंग हो जाए प्रॉपर। सिटी ग्रुप won't hesitate to go for 100 million plus, wow। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आ रहे हैं आज। देयर इज अ ट्वीट टू, इट सेज बर्नार्डो टू बार्सिलोना इज पॉसिबल, ओनली फ्रेंकी लीव। वही मैं मतलब, आप ट्वीट को भी क्यों इंतजार कर रहे हो, आप लॉजिक समझो ना। अगर ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगेन यार, अगेन बारसा फैंस आप बोलिए, यस अगर ओबामियांग निकलते, अगर बेसिकली डिपाई निकलते, अगर बेसिकली फ्रेंकी डियोंग निकलते, फिर पॉसिबिलिटी है। आई डोंट थिंक अदरवाइज पॉसिबिलिटी है। मतलब कैसे लाएंगे भाई, हाउ विल यू आल्सो गेट वन फॉयथ, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट इन ट्रेनिंग टू इनकन्वीनियंस। तो मतलब फॉयथ इज कमिंग टू बार्सिलोना, 40 मिलियन यूरोस की बातें चल रही है, तो आई थिंक दैट इज मोर नीडेड फॉर यू। यस, डेफिनेटली आप सोचे थे कि यार मे बी Araujo can play right back and Kunde can be a right back cover, लेकिन कुंडे has gone on record saying that he doesn't want to play right back, he prefers playing center half, उसमें कोई दो राय है नहीं। ऑब्वियसली आप इतना बड़ा मूव कर रहे हो, नॉट टू प्ले इन योर नॉट टू फेमिलियर पोजीशन, और he has a right to say that। of course जावी ने भी पूछना है यार, जावी doesn't want a player unhappy, especially if it's a new player who's not even registered technically, right? And yes, Alonso को भी लाना है by the way, yes Alonso is in the waiting, वो भी आने वाला है। रोनाल्डो चेल्सी इज नॉट हैपनिंग इन माय ओपिनियन, प्रतीक बोल रहे हैं। लेट्स सी आदित्य, बिग अप ब्रो, कैसे हो? ऑल गुड टू सी यू। ओके लेट्स सी भाई, यूनाइटेड ऑफरिंग, नहीं यार, होमलैंडर लाइक आई सेड नॉट हैपनिंग। फुली फिट कोवा शुड बी फर्स्ट स्टार्टर फॉर मिडफील्ड, अरे यार डेफिनेटली यार, डेरेन। चलो थोड़ा चेल्सी की बातें हो जाते हैं, काफी सारा आई थिंक 20 मिनट के ऊपर हम बात कर लिए मेजरली अबाउट बार्सिलोना, एंड विल कम टू दैट, बार्सिलोना, सिटी, मैन यूनाइटेड, ऑफ कोर्स आएंगे वापस। बट हाँ, क्विकली बिफोर दैट, मैन यूनाइटेड के बारे में यार, यहाँ पर मैं बोलता हूँ, एलॉन मस्क हैज सेड समथिंग, व्हाट हैज ही सेड? दैट्स अ जोक बाय द वे, लेकिन उन्होंने लिखा था आई एम बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर वेलकम। दैट वाज बेसिकली अ पन इंटेंडेड, लेकिन he just confirmed that no, this is a long running joke on Twitter, I'm not buying any sports teams, लेकिन also people know that he might just actually to be clear, he supports the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party, कुछ बोले है, लेकिन I am buying Manchester United, you're welcome। तो maybe he is basically, if at all, if he buys a team, it would be मैन यूनाइटेड, वो भी उन्होंने बोला है इन ट्वीट्स एज वेल। दे वर हिज फेवरेट टीम एज अ किड, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ होप है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए फ्यूचर में। तो अगर सर एलेक्स फर्गसन से बात करते हैं तो समथिंग मे हैपन, बट यार नथिंग इन द नियर फ्यूचर। आई डोंट थिंक नाइटन भी आने वाले हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्लेजर्स फॉर यू ऑल, एज मच एज यू डोंट लाइक इट, बट कम ऑन पीपल, 63 पीपल वाचिंग, सब लोग ने कर दिया लाइक, सब लोग ने कर दिया सब्सक्राइब, डजंट टेक अ बक, प्लीज कंसिडर डूइंग दैट भाई। मतलब सब लोग, मच लव टू यू ऑल, ऑफ कोर्स, मतलब आई एम हियर टू डिस्कस ऑल द ट्रांसफर स्टोरीज एंड ऑल द न्यूज विद ऑल माय फ्रेंड्स, दैट इज ऑल ऑफ यू। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट आवर सेकंड चैनल व्हिच इज ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, वहां पर वी आर डूइंग अ मैडनेस, वी ऑलमोस्ट वन द वर्ल्ड कप and what not, and of course हम 6 ट्रॉफीज जीत गए हैं, going for the 7th tonight hopefully। well, no offense to Barca fans, but Gerard Romero is the same guy who told Barca can get
Bernardo Silva for 50 to 55 million. Well, it's good that he updates, but he treats transfer like a TV show, which I hate. You know what? I genuinely believe that Gerard Romero is more like, what do you say? एक इमेज बिल्ड कर दिया उन्होंने दैट व्हाटएवर ही सेज ये पत्थर की लकीर है. यस, डेफिनेटली 90% जो बोलते हैं सही होते. ही हैज हिज सोर्सेस. ऑफ कोर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज इनडायरेक्टली वर्किंग विद बार्सिलोना इन द पास्ट. बट एट द एंड ऑफ द डे, इट इज क्लियर दैट ही इज यूजिंग सोशल मीडिया टू हिज बेनिफिट. वो क्या हो रहा है, एक होता है ना, बहुत सोशल मीडिया में अनगिनत मिलेंगे. सोशल मीडिया क्या भाई, यूट्यूब में मुझे मालूम है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अनगिनत लोग मिलेंगे हु आर बेसिकली देयर जस्ट टू बेसिकली फॉलो द क्राउड. सच में बोल रहा हूँ, भेड़ चाल है. और करते हो भाई, आप बोलते हो कोई बड़ा इमेज कोई बोलता है कोई भी चीज, एंड दैट इज व्हाई रोनाल्डो नीड्स टू बी केयरफुल इन व्हाट ही स्पीक्स, फॉर एग्जांपल. इसलिए हम बोलते हैं, राइट. इसलिए मे बी लुकाकू जिन्होंने किया बहुत ही गलत किया, बिकॉज देयर आर hundreds of millions of people there in social media, और वो लोग सब मान लेते हैं बस, they just like, और ज्यादा लाइक्स तो ज्यादा, और वही यूट्यूब का एल्गोरिथम, वही बेसिकली ट्विटर का एल्गोरिथम, वही बेसिकली फेसबुक का एल्गोरिथम, कहीं का भी एल्गोरिथम वो है कि यार आपको जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे, उतना ही ज्यादा प्रमोट करेगा आपका बेसिकली कंटेंट. ठीक है, तो वो गलत है एल्गोरिथम, लेकिन इट इज व्हाट इट इज. तो जेरार्ड रोमेरो नोज दैट क्या व्हाट पीपल वांट, व्हाट द जनता जनार्दन वांट, and he starts with that. So it's almost like एक बोल सकते हैं ना, एक जैसे एक इलेक्शन का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, when you actually प्रचार करते हैं अपने पार्टी का, तो he is like प्रचार कर रहे हैं, उसको बेसिकली बैकिंग मिल रही है, और देन meanwhile obviously थोड़ा सा सच भी है उसमें, तो इसलिए he kind of goes with it and that kind of works. लेकिन यार मेरा लॉजिक है, आप लोग बोलिए. I genuinely believe that, nothing against him or nothing against English media as well. Let's see, and काफी सारे comments है. Again, people, you can super chat. आपको लगता है, if you feel that I need to prioritize some comments, I'll certainly do that. Again, I cannot go through each and every comment, but I love you all. I'll try and take as much as possible. Yes, Ankit, तो यहाँ पर अगेन चेल्सी पर आ जाते हैं क्विकली. वापस से मैं चेल्सी से मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना चला गया. लेकिन देखिए, एज अ क्विकली मैं एक रिएक्शन देना चाहूंगा. देखिए चेल्सी क्या कर रही है ना, देखिए they are not looking at long term, they are not looking at short term. I mean, short term क्यों नहीं देख रहे, और that is the proof क्यों. And yes, I'll come back to other clubs as well. भाई, people don't worry about that, भागिए मत. यहाँ पर चेल्सी के बारे में बात करूं, मतलब ऐसे नहीं किया भाई कोई तुच्ची क्लब है भाई, वर्ल्ड कप चैंपियंस अभी भी. जस्ट टेलिंग यू ऑल. तो यस, मच लव. यहाँ पर देखिए सेजारे कैसेडाई जो आए, सेजारे कैसेडाई जो है भाई, अगेन आई एम नॉट वॉच्ड अ लॉट ऑफ सेजारे कैसेडाई. ही इज अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर. ही इज अ मिडफील्डर जो खेल सकता है अटैकिंग मिडफील्ड में, जो खेलता है डिफेंसिव मिडफील्ड में, जो खेलता है सेंट्रल मिडफील्ड. ठीक है, ही इज अंडर 19 इटली इंटरनेशनल. काफी अच्छे प्रोमिनेंस में आए इन इंटर मिलान इन अंडर 19 टीम, बट ही इज नॉट प्लेड सीरिया इवन. तो क्या बोलोगे, ही इज साइनिंग फॉर नाउ और द फ्यूचर इफ इन केस से वर्स्ट केस जॉर्जिनियो लीव्स. मुझे नहीं लगता जॉर्जिनियो निकल रहे कहीं. एक तो पहली बात ये, व्हाई, बिकॉज रैबियो भाई नहीं निकल रहे यूवेंटस से एज ऑफ थिंग्स स्टैंड. तो जॉर्जिनियो विल स्टे इन चेल्सी. एंड ऑफ कोर्स वी हैव कोवाचिच, जैसे कमेंट किया था लोगों ने दैट कोवाचिच इज प्रोबब्ली अ स्टार्टर अगर फिट होते तो. कांटे तो है ही इस साल के लिए. तो काफी सारे मिडफील्डर्स ऑलरेडी है. रूबन लॉफ्टस-चीक इज मेकिंग अ कमबैक. गैलेगर आए हैं, आई डोंट थिंक इज गोइंग एनीवेयर. तो यार 5 मिडफील्डर्स है प्रॉपर. तो चुकुमेका हो गए, सेजारे कैसेडाई हो गए, और ओमारी हचिंसन हो गए. दीज 3 कैन बी द मिडफील्डर्स फॉर द फ्यूचर. तो यहाँ पर देखिए डबल पिवट वाले कैसेडाई और चुकुमेका, और बेसिकली और अटैकिंग मिडफील्डर में है ओमारी हचिंसन. दैट विल बी ब्रिलियंट. दोज आर 3 मिडफील्डर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ चेल्सी विद बिली किलमोर आल्सो देयर. आप सोचिए इस बारे में. ऑल आर अराउंड 18 to 20 इयर्स ऑफ एज, और दैट इज फॉर द फ्यूचर. सेम थिंग हम बिल्ड कर रहे हैं. टॉड बर्ली ने सोचा है नहीं, we'll take a pun because what we have faced the last year, हमने सब देखा है, एक साथ इतने लोग ओल्ड हो रहे हैं and all that. So finally I think we can probably get in a goalkeeper as well to replace Kepa, जो finally hopefully by January gets a buyer, or we will get in Slonina as well. तो वहां पर we are well covered. Center back situation में again you must say that we lost a few center backs, लेकिन if people know we have Mbayamba, वो अभी तक बेचे नहीं हम. He is a decent center half as well. So again, मतलब there is a lot of scope. Trevor Chalobah, I would still consider him one for the future. He is the starter in the future. अभी के लिए starter नहीं है. तो यहाँ पर देखिए Chelsea are building a very strong team. जो हुआ in the last few years, again coming back to that logic जो नहीं हो रहा था last एक साल से. अंकित भैया, as a Milan fan, how do you rate Daniel Maldini? भाई मतलब must to learn. I don't rate him that much, to be very honest. But again,
he is in the right hand, simply put, और उनको रहना चाहिए वहीं. I don't think should make a lot of changes here, right? Okay, running down the wing, Silva. Oh wow. Let's see. Yeah, bilkul. Again, I'm coming to Manchester United again. Just give me a couple of minutes, bro. Ayush, big up. भाई बिप्रा पूछ रहे भैया कैलम हसन-ओडोई क्या लगता है अच्छा फिट होगा आर्सेनल में. तो यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं चेल्सी और आर्सेनल के बारे में, बिकॉज यस लंदन क्लब्स, देखिए यार पुलिसिक तो लग रहा है कि यार ही इज गोइंग ऑन लोन, लेकिन अगेन आई वुड डाउट इट. ठीक है, एज पर रिपोर्ट्स बहुत सारा मोमेंटम मिल रहा है उसको, लेकिन आई रियली डाउट है, जेन्युइनली डाउट इट. अगेन रीजन क्विकली मैं बोलता हूँ वहां पर, क्योंकि पुलिसिक इज बेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में. आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक सैंचो एज मच एज आप बोलोगे राइट हैंड साइड में बेटर है. आई थिंक रिसेंट ईयर्स में डॉर्टमुंड में लेफ्ट हैंड साइड में बेटर किया है उन्होंने. ठीक है, तो आई वुड कंसिडर मोर लाइक अ लेफ्ट विंगर. तो आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग. ही इज नॉट अ राइट साइडेड प्लेयर एनीवे आजकल. ठीक है, इन डॉर्टमुंड डेज ही यूज्ड टू बी. देन कैलम हसन-ओडोई, यार वही नहीं, पेड्रो नेटो भी आर्सेनल के साथ लिंक हुए वेरी वेरी स्ट्रांगली फ्रॉम वुल्व्स. वुल्व्स हैव साइंड क्रेजी नंबर ऑफ प्लेयर्स एज वेल, स्पेशली इन मिडफील्ड जो खेल सकते हैं इन विंग्स. तो वहां पर आप देखिए दे हैव गॉट अ फ्यू, आई थिंक गोंजालो हैज कम, देन मे बी दे हैव गॉट आई थिंक मैथियस नूनेस, वो भी यार आने वाले हैं. तो दैट इज लाइक क्रेजीनेस मैन. मिडफील्ड और विंग्स में दे हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन अटैक एज वेल. तो यस डिफेंस में दे हैव लॉस्ट पीपल, so they might actually get rid of Pedro Neto. क्यों? क्योंकि Pedro Neto is someone who is also injury prone. ठीक है, and that is the only reason why they want to cash in on Pedro Neto. Callum Hudson-Odoi to Arsenal मुझे नहीं लगता. I would say it very weak. The reason being that he wants to go to a club जहां पर वो start करे. ठीक है, I don't think in Arsenal he starts. Martinelli यार what bang hot form में है वही नहीं. Remember ESR is coming back from injury. ESR starts over Hudson-Odoi all day long, every day and a Sunday. ठीक है, तो अगेन कैलम हसन-ओडोई का बेस्ट पोजीशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइक अ पुलिसिक, नॉट ऑन द राइट हैंड साइड. ऐसे भी राइट हैंड साइड में बुकायो साका है, तो वो नहीं होने वाला बिपरा. लेकिन पेड्रो नेटो कैन बी, बिकॉज आई डोंट थिंक पेड्रो नेटो विल एक्सपेक्ट टू स्टार्ट एवरी गेम. दैट्स माय ओपिनियन. आप बोलिए आपको क्या लगता है. एंड यस ओबार्डो चेल्सी वेरी हॉट. यस इट इज बेसिकली माइटी बिकॉज ऑफ टूकल्स इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ टॉड बॉली बैकिंग टूकल. लेकिन अगेन द फैक्ट कि बार्सिलोना कम नहीं कर रही है, 30 मिलियन यूरोज इज टू मच आई फील फॉर 33-year-old. मुझे लगता है just the fact that Aubameyang का record in London off the pitch is not good, that might actually work in Chelsea's favor. Yes, उन्होंने बोला था that the fact is yes he has had problems in Arsenal, but I don't know the truth. So he might be open to it. लेकिन क्यों it might be useful is because Barcelona should be knowing, as much as he has come only in January and सस्ते में आया था मैं बार्सिलोना के लिए, तो it'll be a profit for them, plus the fact that he's having that baggage. So if they want to sell Oba for the cash, अगर वो बर्नार्डो को really लाना चाहते हैं, then maybe they might be open to it just about, लेकिन to negotiate to 25 million euros. लेकिन यार again लग रहा है माइटी, मैं चाहता हूँ ये वीक हो जाए, and I want Ronaldo to come. लेकिन हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस बिल्कुल. कैसेमिरो सीरियसली कंसिडरिंग, नहीं यार ये नहीं होने वाला भाई. मार्सा मत सुनो यार इस रिपोर्ट को. And yes, Jan Sommer is one. DG Ayush again, Jan Sommer के पास में Gladbach की भी ऑफर आ रही है. Gladbach for an extension for a few years. So it depends on, I think, the money. So if Manchester United able to give more money, I think Jan Sommer is going to take that. उनकी final move होगी, final big move, absolutely. बिल्कुल आई एग्री विद दिस 100%. एज मच एज यार आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट यूनाइटेड, द फैक्ट इज रियल. मतलब आप लोग पता नहीं कौन से भ्रम में जी रहे हो यार. मतलब जो लोग सोच रहे कि कैसेमिरो आ रहे यूनाइटेड, अगर आ जाएगा, इफ आई प्रूवन रॉन्ग यू कैन क्लिप दिस डेफिनेटली. लेकिन यार लेट्स गेट रियल. मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट इवन लाइक लीव लास्ट सीजन, इस सीजन में फ्रॉम अ रियल मैड्रिड. Why would he come to Manchester United? Just think about it. It's total rubbish. नहीं होने वाला है. जो क्लिकबेट ट्राई कर रहे हैं भाई, इसके साथ प्लीज डोंट encourage them. नहीं होने वाला. I am telling you factly. ठीक है, with Frenkie likely to stay, don't see Silva coming. It's absolutely one or the other. Now we'll probably sell Depay, Oba, Dest and get a right back starter and settle in window. Okay, so basically Oba को बेचने वाले and Depay. भाई ये काफी रिस्की है. It's a bit too risky in my opinion from Barca's perspective. Sadiq bhai, Sancho is being played right by ETH predominantly. Yes, he is being played, Sadiq bhai. But again, I would rather see him on the left side because he can be a goal threat for you all. पर अब ये जनरली मुझे लगता है, आपको याद है तो लास्ट 2 सीजन्स में जो हालैंड के साथ केमिस्ट्री बनाई थी उन्होंने, स्पेशली द सीजन बिफोर लास्ट, ही डिड ब्रिलियंटली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल. Ankit, I saw some fans comparing Rudiger with Koulibaly.
I love Rudy for what he's done, but Koulibaly is one of the best defenders of the decade. His only mistake was not taking early move. Therein, भाई दोनों ही बढ़िया डिफेंडर्स है. Yes, Rudiger had one bad season under Lampard, you can say. लेकिन again, he wasn't playing with his full mind in my opinion. Simply put, he wasn't kind of playing for Lampard. It was very clear later on. बहुत clear हो गया. Yes, as much as he's a professional, I would still say people forget by Rudiger. हमने जब खरीदा था, he used to play as a back four in Roma. Yes, it was in Roma, but still he used to play very well before the injury. Thoughts on Fofana? Yes, तो यहाँ पर वापस से चेल्सी पे आ जाते हैं थोड़ा सा. आज काफी न्यूज कवर करना है भाई, तो आई नो 2 दिन से आया नहीं हूं मैं, तो थोड़ा तो यही पेंडिंग. तो यार फोफाना देखिए, as per reports Anirban, Fofana is going to put in a transfer request. Yes, as things stand, Leicester are not dropping the price. They are like नहीं. तो what Chelsea क्या इसलिए वेट करी भाई? आप सोचो Chelsea थर्ड बिड क्यों नहीं की? और यहाँ पर मेरा लाइट भी चल गया, एक सेकेंड, डोंट वरी, इट विल बी कमिंग बैक. एंड यस, यहाँ पर एक मोमेंट मुझे मिल गया बहाना बोलने के लिए. People wondering, भाई what is this photo? This photo is basically the logo of Almighty Sports Plus. तो ये हमारा दूसरा चैनल है. भाई काफी लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, और काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया. लेकिन सब्सक्राइब करके भूल गए आप लोग. तो यार वो मत करिए. Not only for Almighty Sports Plus, not only for Almighty Blues FC, but for any content creator. आप एक चीज मैं समझा देता हूँ, for people out there who think that they are subscribing and helping the creator, of course it's helpful, क्योंकि यार सब्सक्रिप्शन से ही आपको YouTube याद दिलाता है. लेकिन more than that, आप बेल नोटिफिकेशन बटन दबाइए, और बेल नोटिफिकेशन बटन से आपको ज्यादा रिमाइंडर्स आएंगे. तो वहां पर इट्स अ मस्ट दैट यू प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. और अगेन आई जस्ट स्टॉप द कैम टू शो दैट ये लाइट है, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग इट दैट दिस इज बेसिकली द लोगो ऑफ दैट. तो अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है विद ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, ट्रस्ट मी, इट इज ऑल्सो प्रॉपर कंटेंट. वी आर डूइंग 90% वहां भी फुटबॉल ही कर रहे हैं भाई. तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट मिल रहा है, वहां पर नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है. तो वो क्यों नहीं मिल रहा है आप लोग बताइए. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चेंज द कंटेंट, वहां पर थोड़ा बाइफरकेट करने वाले. बट अगेन अभी के लिए वी नीड द व्यूज मैन. मतलब आई एम जस्ट काइंड ऑफ पुटिंग अ प्ली यहाँ पर. एंड अगेन डू नॉट फॉरगेट टू आल्सो वॉच, नॉट जस्ट बेसिकली सब्सक्राइब, and forget about the channel that goes for all the channels, right? Not only mine. So यहाँ पर quickly मैं वापस से ऑन करता हूँ मेरा कैमरा, उससे पहले कि आप लड़ जाए. बट एनीवे भाई देखिए, फोफाना 100% आई थिंक वो डालने वाले ट्रांसफर रिक्वेस्ट. अब वो अलग बात है ट्रांसफर रिक्वेस्ट मानेगी कि नहीं मानेगी, बिकॉज लेस्टर वीकेंड में बहुत गंदा परफॉर्मेंस था उनका. फोफाना वाजंट देयर इन द माइंडसेट, लेकिन आई थिंक दे हैव टू टेक इट. 80 मिलियन देने को तैयार है. वो चेल्सी ट्राई कर रही है भाई, ऑफलाइन ट्राई कर रही है नेगोशिएट करने का, और वो नहीं हो रहा है, इसलिए फोफाना करने वाले रिक्वेस्ट. और फिर देखते भाई, लेट्स सी व्हेन. डोंट टेल मी 100 लाइक्स नहीं हुए पीपल, कम ऑन भाई. 150 का टारगेट है, ज्यादा है नहीं. मैं 300-600 टारगेट रखता भी नहीं हूँ. आई नो देखते तो काफी लोग हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, बिकॉज इफ यू डोंट लाइकिंग माई स्ट्रीम, यार आप लोग देख रहे हो तो कुछ तो अच्छा लग रहा है इसलिए देख रहे हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए. एंड जस्ट नॉट फॉर मी बट फॉर एवरी कंटेंट क्रिएटर. ओके, कोई नहीं, देखते भाई. फर्स्ट फ्री में आया था भाई, सस्ते में क्या? अरे सैलरी तो लगती ना. ओबामेयांग के बारे में बात हो रही है भाई. सैलरी तो लगती ना, तो सस्ते में आया था. दैट्स व्हाट आई मेंट. सैलरी भी लगती ना, वेजेस. If Silva didn't renew, then City will lose him even for a lesser than 50 million fee. So it's better they sell him this season to Barca. Okay, that's logically that's not wrong at all. मेरा एंड मेरे भाई का बर्थडे है. अगर 31 को ही रोनाल्डो चेल्सी आ जाए तो बेट बर्थडे. अरे भाई बढ़िया बढ़िया. यस, सर्जियो गोमेज, इस पर भी आएंगे भाई. मतलब अगेन जस्ट लाइक अ कैसेडाई, मैंने उन्हें ज्यादा देखा नहीं है, बट एंडरलेक्ट में एटलीस्ट इज प्लेड मच, तो यार थोड़ा ज्यादा विजिबल है. He is a player who is maybe in the Zinchenko mode, who can play. He's a little bit of ball player, who's a left back. He's not like a hardcore defender of the likes. तो maybe City के मोड में सूट करते हैं. लेकिन will he start? I don't think he'll start enough games. Will he stay? I think he'll stay, because they need a left-sided defender as well. So I think he might just end up staying, or he'll learn from basically a Cancelo. Cancelo is right-footed, but anyway, Cancelo starts all day, every day. And yes, Sergio Gomez भाई, in terms of price बहुत ही अच्छा साइनिंग हो सकता है if it proves out to be right, just like Alvarez. I don't think City are in hurry to sell. They would rather keep Silva, win the league again, and let's I think more it's more about widgets. It's not a league, it's about the Champions League. I think Bernardo Silva brings that level of experience that in terms of international football also, that उन्हें चाहिए Champions League. Chelsea has had a good history of dealing with rogue players. भाई लेकिन वही है ना,
have we had yeah, Alex is a very good shot, लेकिन Diego Costa wasn't a long term signing for Chelsea, was it? So आप you can yeah, divine the great. I hope it will happen, but looks like it's weak right now. The reason being it's Aubameyang who's still getting the interest of Chelsea. Simple as that. और बारसा को चाहिए पैसे. अगर they want to sign Bernardo Silva, they might get rid of Aubameyang and play Ferran Torres as a false nine in Lewandowski's absence. Sancho a striker? नहीं, no ways, नहीं होने वाला. From Chelsea with Modric and Kroos to playing with Fred, McTominay, from playing with okay, Serge बोल रहे, from playing with Modric and Kroos to playing with Fred, McTominay, Maguire, etc. Probably the last thing Casemiro wants in life. सॉरी हंस रहा हूँ भाई, लेकिन वो आप लोग भी हंस दोगे. कम ऑन, लेट्स बी रियल. देखिए यार, एक चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगेन, बाकी लोग बोल रहे थे ना बट चेल्सी, तो देखिए यार चेल्सी का ऐसा ना, चेल्सी स्टिल नीड टू गेट रिड ऑफ लॉट ऑफ प्लेयर्स. तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई चेल्सी साइन नहीं कर रही बिग फर्स्ट टीम प्लेयर्स अभी. लास्ट वीक में विल कम बैक टू इट. We want to get rid of a Batshuayi. We want to get rid of a Barkley. We want to get rid of an Ampadu, an Emerson. बहुत सारे लोग हैं अभी चेल्सी में, कैनेडी, तो इतने लोग हैं एंड वी आर ट्राइंग द बेस्ट टू गेट देम आउट अभी, while ongoing discussions चल रहे with Fofana, with an Aubameyang, with maybe a Frenkie de Jong. तो वही चल रहा है अभी के लिए, और meanwhile youngsters to sign कर रहे हैं. तो I think it's good the way it's going. Of course after the weekend performance, एक ही performance I know is Spurs from we turn up, but let's be honest, that shows that we can really play well if we want to, right? Rudiger is a character you need to irritate the opposition. Koulibaly is more like a silent leader of men, more composure. Two very different personalities but equally adept. Okay, यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा. मानव is a brilliant point. देखिए, as much as Rudiger aggression दिखाते हैं in terms of expressions, I think in terms of tackles, Koulibaly is next level. Koulibaly भाई, एक स्लाइड टैकल मारते हैं वो, he goes through the player. मतलब he reminds me of a Zuma who has his head on the mind. मतलब वो मैं बोलूंगा, mind on the head rather. मतलब that is what I would say. तो Koulibaly shows aggression a lot in on the pitch in terms of tackles. Rudiger in terms of tackles he also does, लेकिन भाई he is more like, you know, जो shithousery है, he does all those things. He is a different kind of a character totally. In gameplay I think Koulibaly is ज़्यादा aggressive in gameplay, मैं बोल रहा हूँ सच में. Anyway, रूडी का पागलपन इंपॉर्टेंट, या पागलपन एग्जैक्टली, पागलपन है रूडीगर में, वो विच विल मिस. यस, लेट्स गेट टू लाइक्स. भाई कितने लाइक्स हुए? डोंट टेल मी वी नॉट गॉट 100 लाइक्स. पीपल कम ऑन. भाई लाइक बटन है, थम्स अप बटन वो होता है, वो खाना है. तो क्या होता है ना, यूट्यूब एल्गोरिथम में जब तक वो 100 लाइक्स नहीं होते या 200 लाइक्स नहीं होते, they don't kind of recommend to people who are not our subscribers. So हमें कैसे ग्रोथ मिलेगी? With all your help. And you guys are a part of the family, so come on, let's get to that, and not just my stream, every stream out there. Okay, Parveen, again मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगा, for whatever reason you guys think it's Almighty Blues Cricket. देखिए भाई, the reason I had changed the name from Almighty Blues Cricket to Almighty Sports Plus is because वहां पर क्रिकेट मिनिमल आ रहा है. क्रिकेट इज ओनली सीजनल. ठीक है, क्रिकेट आएगा ओनली इन मेजर मैचेस. ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि यार आई वांट टू फुटबॉल. इनफैक्ट मैं ज्यादा फुटबॉल ही करता हूँ वहां पर डेफिनेटली ज्यादा फुटबॉल करता हूँ. तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. Not only that, press the bell notification icon on Almighty Sports Plus भी, and not just Almighty Blues FC. Please, it's always linked in the description below. पहले 3 लाइन्स में आपको मिल जाएंगे. इवन आ डिस्कॉर्ड सर्वर, वहां पर भी मैंने श्रेय पाटिल से बात करो जो सेटअप किया हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर. We will try to do something very soon for especially members. Yes, we were waiting for 25 members, लेकिन भाई 25 members होते होते क्रिसमस हो जाएगा, because आप लोग for whatever reason you don't feel it's worth becoming a member for me, then it's absolutely fine. लेकिन अभी भी membership is open. You are having perks. I can quickly let you all know verbally वापस से perks. Yes, थोड़ा advertisement दे रहा हूँ बीच stream में, लेकिन वो required है because I haven't been live for a few days. देखिए यार, पर्क्स ऐसा है ना, आप देखिए डेफिनेटली एक तो होता है आपको शाउट आउट मिलता है एक्स्ट्रा, आपके कमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है एक्स्ट्रा ऑन द चैट. ठीक है, लाइव चैट. जैसे फॉर एग्जांपल मानव है, डेरेन है, यू नो, काफी लोग अभी जो आप देख रहे हो दे आर मेंबर्स, राइट? I do prioritize on the comments, no two ways about it. I do give them a shout out which they deserve it because वो इन्वॉल्व भी करते हैं. ऑटोमेटिकली आप मॉड भी बनते हो. ठीक है. सेकेंडली ये है, यू वुड ऑल्सो गेट बेसिकली, अगर आप नेक्स्ट लेवल जाते हो, से बिकम एन ऑलमाइटी कोच. तो ऑलमाइटी कोच में व्हाट आई वुड बिकम, से ऑलमाइटी स्काउट में क्या होता है पहले, that I would give you a shout out in social media. So for example, if you are a content creator, if you're an almighty scout, and if you are basically asking me भैया मुझे please थोड़ा promote करो, I will be more than happy to promote you on social media. ठीक है,
उसके लिए बेसिकली, and I know a lot of people tag me on Instagram, a lot of people do. So यार again certain times I might support you, certain times I may not, क्योंकि आप लोग ने अगर मुझे सपोर्ट किया है right from day one, then मुझे मेरा थोड़ा बनता है, that is human tendency, right? लेकिन अगर आप उसके बावजूद अगर आप नहीं हो ऑलमाइटी स्काउट और अगर मैं करूं, देन थोड़ा अनफेयर हो जाएगा फॉर ऑलमाइटी स्काउट, दे विल से यार ये तो गलत बात है। तो ऑलमाइटी स्काउट्स को हमें देने वाला हूं ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली फॉर अ कंटेंट क्रिएटर इवन मोर सो। अच्छा, देन ऑलमाइटी कोच एक है मेंबरशिप, अगेन द प्राइस इज क्वाइट अफोर्डेबल माय व्यू, ऑल द प्राइसेस फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड क्विकली। देखिए ऑलमाइटी कोच में आपको बेसिकली और भी मिलेगा, और ये क्या मिलेगा आपको हर एक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू सी आई एक्चुअली गिव अ शाउट आउट टू ऑलमाइटी कोचेस, इफ यू आर ओके विद इट आई विल आल्सो इंक्लूड योर लिंक, तो पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली, वो भी है। These can be people who write any articles, these can be content creators, these can be just gamers, anyone. And of course you have an almighty board member and an almighty goat, वहां पर obviously we are talking about proper, जैसे डिस्कॉर्ड सर्वर में हम प्लान करने वाले हैं, we are going to do a one on one, we are going to do basically a situation जहां पर आप content creator, आप एक almighty goat हो, तो I will invite you to the channel as well in the future अगर आप interested हो, तो those are things that we will do. So there's a lot of perks out there, plus I am planning something on Discord server especially for the members, plus you also have access to a prediction league, और उसमें आप प्राइज जीतोगे अगर आप मेंबर हो, तो लॉट ऑफ पर्क्स है भाई मेंबर्स के लिए, आप देखिए थोड़ा। और लाइक आई सेड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस में हम ज्यादा फुटबॉल ही करते हैं, हाँ ज्यादा वॉच अलॉन्ग्स होते हैं, एफपीएल होता है, फीफा होता है, प्लस वी आर प्लानिंग टू डू लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट, सो वहां पर प्लीज ज्वाइन करिए। I don't see why Leicester would budge. They offered him a long contract when he was suffering a huge injury. They are entitled to ask for money. Yeah, they are entitled to ask for money. It's business, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन I think player खुद चाह रहा है ना विजय, that's the difference. Player himself wanting. Yes, in the past we've also had such occurrences. भाई everyone do share the stream. Let's get more Chelsea fans in the house. यहाँ पर क्या हो रहा है ना, all it's a fan channel for all to see. So बाकी जो फैंस है वो लोग सोचते हैं मैं चेल्सी के बारे में बात करता हूँ खाली, और जैसे कोई लोग सोचते हैं अबाउट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस मैं क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ खाली, लेकिन नहीं है वैसा। यहाँ पर जो चेल्सी फैंस है वो लोग सोचते हैं मैं बाकी क्लब्स के बारे में बात करता हूँ, तो क्या हो रहा है ना यहाँ पर थोड़ा ये हो रहा है। तो लेट्स गेट मोर पीपल इन, होपफुली भाई लाइक्स के साथ और आ जाएंगे। देखिए अगर प्लेयर खुद देता है ट्रांसफर रिक्वेस्ट, व्हाट इन एनीवन्स व्यू, स्पेशली वो एक यंगस्टर है, व्हाई कुड दे बी फोर्स टू स्टे? अगर आप फोर्स करते हो यू विल नॉट गेट द 100% कमिटमेंट इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और यही मैं चाहता हूं कि बेसिकली लेस्टर कैश इन ऑन द मनी एंड जस्ट गो फॉर इट। आई थिंक 80 + 5 मिलियन चेल्सी तैयार है, चेल्सी तैयार नहीं है ब्रेक करने के लिए रिकॉर्ड, दैट्स द ओनली डिफरेंस। नहीं, ही इज नॉट वर्थ, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन वी आर ऑन August 17th भाई, तो अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आई थिंक ही माइट जस्ट गो फॉर इट, इट्स अ इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, कैन प्ले, या बिल्कुल बिल्कुल वही है, ही इज मोर लाइक अ Zinchenko, जैसे मैंने बोला, he can also play in multiple positions. Sergio Gomez will get minutes similar to Zinchenko. Excited about him since a captain. Fantastic. Company speaks highly of him. Yes, that's a very good point. Company has suggested, I believe. Yes, very good one. Why Shrey Patil in the house? Yeah, Kukureya's conference. Tuchel already compares him to Aspi, and he is ready to take the responsibility in the future. And he's a very humble guy, by the way. By not only kind of compares him to Aspi, he himself answers like Aspi. एसपी का इंटरव्यू हुआ था लास्ट वीक, कुकुरिया का इंटरव्यू हुआ था, सेम चीज बोला ऑलमोस्ट। लेकिन भाई बिग अप भाई श्रेय पाटिल, आल्सो मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। श्रेय बात करनी है अपने को रात में भाई, जब भी टाइम मिले। दो आई लव टू बट आई थिंक ओबा विल कम। यस, आग्निक राइट यार, एक तो आ जाए कम से कम, दोनों ही नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वी वांट वन। यस, एंथनी गॉर्डन, व्हाट अबाउट हिम? पीपल, डू यू थिंक एंथनी गॉर्डन इज वर्थ 50 million? Again, a youngster who can play, central attacking midfielder or right attacking midfielder. I think Anthony Gordon, the reason why Chelsea ja rahe, because we are wanting that nimble players who press high and have that zeal about the Premier League. वो समझते हैं zeal को. He is one of them. Tuchel likes such players. जो देख रहे हैं वो गैलेगर में, जो देख रहे थे माउंट में हमेशा से. I think that is why he's going rather than a Ziyech. तो वही लग रहा है मुझे, despite him being right-footed. लेकिन मुझे नहीं लग रहा एवर्टन विल गेट रिड ऑफ हिम, बिकॉज एवर्टन आर नॉट गेटिंग मेनी प्लेयर्स ईदर, राइट? तो अगेन चेल्सी आर गोइंग फॉर प्लेयर्स जो बहुत डिफिकल्ट आने में, तो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। लेकिन भाई हमारे पास डायरेक्टर है नहीं, तो आई कैन अंडरस्टैंड the systematic mechanism employed by Anderson to frustrate David Nunez into getting a red card is a testament of what EPL is all about. Nunez had better learn from that. He should learn, trust me on that.
Chelsea doing the selling now. Yes, Joe, Hakim, Puli, one will leave permanently. I think Hakim Ziyech leaves permanently because of his age. Pulisic may not leave, in my opinion. Should not leave, in my opinion. We need some direct players as well on the left hand side. Let's see. Inside forwards, अब देखते हैं कौन आता है भाई. Chelsea don't go for Fofana. They can sign Frenkie and right wing backup. But we, we are not linked with any other player. We're not strongly wanting some other player. Everyone do like the stream. Ashish in the house. John Terry in the house. Thanks. Bye. Always. Koulibaly's ball distribution definitely will help Jorginho to play the register role as seen. तो यहाँ पर excellent point as always मानव. देखिए यार एक चीज मैं बोलता हूँ. Jorginho, as much as he has an understanding with Koulibaly, and you're right, in terms of ball distribution, he's brilliant. He has that Hollywood pass on him as well. लेकिन I would rather want someone of a ball carrier like a Kovac to start more games. I simply put. हाँ अभी के लिए injured है दोनों Kante and him. लेकिन I would rather have him. Gallagher I still see more effective in number 8 अगर हम जाते उस रोल में. और हाँ हो सकता है हम जाए. लास्ट मैच में आधा गेम के लिए we were playing 4-3-3 boss. 4-1-4-1 we were playing. So maybe Gallagher fits in that number 8. Plus game time of Gavi and others will significantly get dropped. Match time is something a young player needs. Puj is an example. बिल्कुल सही. यार नहीं यार वही है, मतलब जिम्बाब्वे इंडिया का शायद ही करूं मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने सारे चीज है ना, बट लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. लेकिन एशिया कप आ रहा है भाई, काफी प्लान है. मैं रोहित भाई से भी बात कर चुका हूँ भाई. होपफुली वील गेट हिम ऑन एज वेल समटाइम एंड वील डिस्कस जनरली माई सेल्फ एज वेल. एंड ऑफ कोर्स श्रेय, लॉट ऑफ अदर्स बात करेंगे. क्रिकेट विल कम बैक टू द क्रिकेट, लेकिन अभी के लिए फुटबॉल यार जो शुरू हुआ है सीजन, क्रेजी सीजन चल रहा है अभी ना ट्रांसफर्स का लास्ट 2 वीक्स में. Yes, join the membership and check out the school stickers. Thanks man Manav. Thanks a lot to share that. Of course there's one more sticker मैं ऐड करूँ भाई. सब लोग बता दीजिए कौन सा किसका स्टिकर ऐड करूँ. What sticker do you want to see? I am eligible to put one more sticker. भाई मेंबर बता दीजिए what sticker do you want to see. Okay, Uncle Sharma in the house. Thank you to Chelsea for helping us in financial troubles again. Bro, tell me bro, how's Casadei? Tell me definitely how's Casadei. I would like to hear from you. Have you seen anything of Casadei or not? I have seen at best clips, but I would say it's more for box to box, capable of playing multiple positions in midfield. Lekin probably he's more of a box to box, right? Correct me if I'm wrong, but generally, do you think? I know we are overpaying, bhai, when it comes to buying players from Europe. Chelsea, Manchester United देते पैसे देते, और भाई सिटी भी टू सम एक्सटेंट. एंड यहाँ पर बायर्न म्यूनिख और इंटर मिलान सस्ते में लेते भाई प्लेयर्स. आप बोलिए, व्हाट डू यू थिंक? अरे बिल्कुल. लेट्स गेट टू 150 लाइक्स एंड 5k सब्स. ओह यस, उसे ये याद है भाई, वी आर वेरी क्लोज टू 5k सब्सक्राइबर्स. यस मैन, लेट्स गेट टू 5k सब्सक्राइबर्स. ऑफ कोर्स दैट इज जस्ट हाफ वे थ्रू द 10k सब्सक्राइबर्स जो हमारा टारगेट है इस साल का. बट होपफुली यू गाइस गेट अस देयर बाय द एंड ऑफ द ईयर एज वेल. लेट्स गेट देयर एब्सोल्युटली. How is Chelsea helping Inter financially? यही है, Casadei का हम दे रहे हैं ना 15 million plus 5 million euros. And of course, Lukaku, who can forget that? Okay, has Gordon had a single breakthrough season? 10 to 12 goals? नहीं. Manav, even last season में Gordon, in my opinion, was one of the best Everton players. Trust me on that. Not just against Chelsea, but generally भी. I think there are certain players in English Premier League जो do not score the goals, but they are like wow man, एक proper old school English element लाते हैं. वो है Gordon, वो है Dewsbury Hall of Leicester. There are certain players. Dewsbury Hall का different position है than Gordon, but वही है mentality players की वैसे like a Gallagher or a Mount. और हमें चाहिए fighters. We need players who fight for in every match. I think he brings a good element, and I don't think वो शुरू करेंगे हर मैच. Yes, 50 million में आप बोलोगे शुरू करेगा, लेकिन नहीं, he won't start. Let's be honest, Mount, Sterling हमारे वाइड फॉरवर्ड्स होने वाले हैं, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन ब्रेक थ्रू सीजन आप कैसे बोलोगे यार इन अ पोजीशन जहां पर ही इज मेंट टू डू मोर डिफेंसिव वर्क एज वेल एज अटैकिंग. आई डोंट थिंक यू कैन जज जस्ट ऑन गोल्स, कैन यू? I can understand Tuchel at some point, get the best fitting players or play with what we have. It's okay to try, go hard to get players. Yeah, bilkul. But he's a coach after all. Even Mbappe and Haaland should be near 110 million, but we hype the prices. After the game versus Spurs, barring the first Spurs goal mistake, do you feel still Kova should start over Jorginho? Yeah, it's not about that mistake, Manav. Generally ना हमें एक, मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम क्या है ना, आप तो काफी देखते हो भाई प्रीमियर लीग, मतलब ऑल द पीपल हु वॉच प्रीमियर लीग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. चेल्सी ना बहुत सारा स्लो पासिंग करती है. बेसिकली वी ट्राई टू गेट द बेस्ट गोल पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ द विजन. That doesn't make it. आप पास करो, साइड पास करो, लास्ट में साइड से क्रॉस आना है. That doesn't work.
वर्टिकल मूवमेंट हमारा कम होता है, और कोवाचिच इज अ वर्टिकल प्लेयर, और वो वर्टिकल पासेस करते हैं, और वही चाहिए ऑन पासेस ही नहीं, वर्टिकली he carries forward the ball, which is something which Jorginho is much more capable of in terms of passing. जो बढ़िया पास किया था लॉफ्टस चीक के लिए फॉर एग्जांपल इन दैट मैच इटसेल्फ, लेकिन अगेन you would say that he does not do enough of it. Kovacic is more capable of that, और वो basically एक पोजीशन में भी अच्छा रखते हैं, तो आई थिंक he kind of hits both the objectives, तो इसलिए मैं Kovacic को रखता हूँ ओवर जॉर्जिनियो. आपका ये स्टिकर डाल दो, it'll be worth it. Oh wow. This is a good one. This is a good one, Ashray. Let's think about it. I'll go for the other options. लोग क्या बोल रहे हैं? From De Jong to Rabiot to Casemiro. Who's next? MTT to United. TT भाई नहीं Farhan भाई taking a piss, yeah, Chelsea fan. We want to sell Pulisic, Cho and Ziyech will be left with no attackers. Yeah, I don't think हम sell करेंगे सबको. We will probably loan one and sell one. We will keep one. ये होने वाला है. Keep sell loan वही. तो I think Pulisic will stay. Cho will go out on loan and Ziyech will be sold. You heard it here, Gaurav. Kova is injured. बिल्कुल मैं long term की बात कर रहा था. He's not a winger really. I would not term him as a winger. I would term him as more like a right attacking midfielder. He's more like a right central attacking midfielder. He's more in the Mount mold. Mount mold, who's not a core central midfielder but who can play wide. He's somewhere there. I would say. नहीं, he was not in number 9. Definitely नहीं भाई. कोई नहीं. Gordon is very similar to Raheem Sterling. You can say younger version of Sterling. Yeah, I would say more to Mount than Sterling. If De Jong comes, I feel Jorginho would complement him brilliantly. Okay, since he can spot his forward runs and also progress the ball. यार लेकिन हमें चाहिए एक डिस्ट्रॉयर भी ना. De Jong, I don't consider him as a destroyer. Again, De Jong नहीं आने वाला, जहां तक मुझे लग रहा है. He might just stick around with Barcelona at least till World Cup. And then देखते जनवरी में हो सकता है he'll move, but अभी के लिए it depends, like maybe January तक अगर Manchester United fix their problems and come to in the top 4 position, maybe यार he just move to United in January. That might be working out well for United and him. लेकिन अभी के लिए I don't see him moving. Again Chelsea में Gallagher's minutes चल जाएंगे यार अगर वो आता है. As much as I see him as the number 8, Tuchel देखते हैं Gallagher as the number 6 first for whatever reason, because of his destroying ability जो कांटे का है. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कांटे और गैलेगर में से एक शुरू करना जरूरी है चेल्सी मैचेस के लिए. फीफा आज हाँ भाई ट्राई करेंगे एज ऑलवेज. आज कोई मैच तो नहीं है ना? हाँ नहीं है आज शायद. तो फीफा करेंगे ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. उसी पे सब लोग भाई सब्सक्राइब कर दीजिए. ऑलमाइटी स्पेस स्पोर्ट्स प्लस साइन, बस सिंपल है. और नीचे हमेशा टैग रहता है, और हमारे फीचर चैनल में भी है भाई. डू चेक आउट ऑल ऑफ फीचर चैनल्स भाई. हम काफी चैनल्स को फीचर करते हैं. गो एंड सब्सक्राइब टू देम. Pjanic will be interesting to see because Busquets has got red card. That will be a nice one. What is your gut feeling about Spurs finishing in top 4? Wow. Whereas Arsenal was a favorite to be in top 4, considering City and Liverpool be in top 2. देखिए यार, you will hear it here. देखिए, in terms of the squad quality, definitely Spurs has more quality. Yes, that match we outplayed Spurs. लेकिन one match it is against Spurs. हम proper दुश्मनी रखते हैं, तो fair enough, it was showing on the pitch. Overall, I would say that it is basically Spurs have a better squad, and as much as Arsenal have been terrific in the last few weeks, and I know that they're more settled generally than Chelsea and even Spurs, I feel that the manager will make a difference. Or Conte and Tuchel will get us top 4 versus an Arteta. Arteta again just misses out. I would say that is my call. और मैंने किया था in the Premier League prediction same thing 2 हफ्ते पहले शुरू होने से पहले. That's what again Chelsea कर सकती है. I don't think हमारे पास weak squad है. People think we have a weak squad. No, I don't think so. It's just that we need to get that chemistry going or get our confidence back in front of goal. I know easy to say, very easy to do, जो नहीं हुआ in the last 12 to 15 months. लेकिन भाई हमने चैंपियंस लीग जीता था. In that campaign we did very well. We have to think क्या चीज right हुई थी and we have to reproduce that. Okay. Thoughts on Manchester United versus Liverpool? Okay, it's too early, Manav. हम कल करेंगे by the way. But general quick early thoughts दूंगा तो I think it's going to be one of the most interesting games of this particular Premier League. I genuinely believe that because Manchester United are in dire straits. लेकिन I think before that Ronaldo ने जो drop किया है bomb, जिसके बारे में हमने discuss किया already in the stream, will go against United yet again. Yes. I think he should have cleared it. Like Gary Neville says, doesn't matter. You have to lead by example. और उसको clear करना चाहिए था, whether it be staying in United or leaving, whatever it is. Looks like that, for me, Manchester United को बोलेगा bye.
That's what he's going to say, because इतना बुरा quality I don't think he can stay there. That's really what I feel. लेकिन only if Chelsea want him. I don't see any other club kind of going for him. Dortmund, I don't see him going, as much as he can go there, challenge Bayern Munich. Come on, let's be honest, they won't. So I don't see that happening. And again, Dortmund, I don't know क्या उखाड़ लेंगे भाई यूरोप में भी. So I think he's only going to leave अगर उसको लगे कि there can be a club who can win trophies. And I think, yes, we won't win the league, but at least we have a good cup mentality. So he might just come agar we are interested, in case we are not going for Aubameyang, only then. But scrappy 1-1 draw is all what Manav is feeling. I think Liverpool will have the advantage. Yes, they are missing Thiago. They are having Henderson not in form. But I genuinely feel that Liverpool का एक blip रहा है 2 games versus United. Despite the preseason form, yes. नहीं यार, नहीं होने वाला. Simply put. City, Spurs, Chelsea, Arsenal. Okay, Arteta is hardworking, but he just misses the experience trophies. Exactly, Shreyas just echoed me there. Liverpool might have a deja vu of the 2021 where injuries hampered his chances. Farhan is too early. Yes, by the way, I don't know if people heard that. Bhai, people, check out my recent video. Please check out यार, उसका शुरुआत check करो. मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था, उसमें क्लॉप का पोस्ट मैच इंटरव्यू मैंने किया है. आप देखिए भाई, कुछ तो बोल रहे भाई, which entered the building and all that. कुछ ज्यादा हो गया, कोई नहीं. बट यस, लॉट ऑफ अदर ट्रांसफर स्टोरीज भी है. मैं क्विकली यहाँ पे फेब्रिशो का ट्विटर देख रहा हूँ भाई, कुछ आया है क्या चेल्सी के लिए एटलीस्ट, या तो मैन सिटी या बार्सा या यूनाइटेड के लिए. Okay, Rabiot's camp told Juventus they have no intention to reduce the salary requests. No way for Manchester United deal. Manchester United now looking on conditions of Casemiro deal, जो नहीं होने वाला in my opinion. Although Carlo Ancelotti will be key factor in the conversations with the player, नहीं होने वाला भाई, ये जबरदस्ती का न्यूज़ है. लेकिन they are also interested in one Mr. Moises Caicedo. यार, किसी ने देखा है Moises Caicedo को in the Premier League? How has Moises Caicedo done? That is for Brighton. हाँ, they have lost Bissouma, so can they afford to lose even Moises Caicedo? I don't think so. Moises Caicedo रहेंगे in Brighton, तो वो भी weak है. यहाँ पे Ruben Neves is getting linked to Barcelona. Maybe अब जो सिटी में खरीद लिए है बर्नार्डो सिल्वा घर और फ्रेंकी, अभी तक लड़ाई कर रहे, तो मे बी जितना खिला नहीं चाहेंगे, मे बी डजंट इवन गेट रजिस्टर्ड, हु नोज, दे विल डीरजिस्टर हिम एंड गेट इन रूबन नेवेस. लेकिन मुझे नहीं लगता रूबन नेवेस आने वाले हैं. दैट्स माय फेयर ओपिनियन एनीवे. बट शॉन डाइश विल बी मैनेजर. आई डोंट नो यार, कम ऑन. आई थॉट आप बोलोगे सैम यार, बिग सैम, लेकिन कोई नहीं. No pun intended. The fact is, they are going through a tough time. Eric Ten Hag will not walk out. Let's be honest. बहुत ही जल्दी आ जाएगा. देखिए यार, यहाँ पर again midfielder कौन आएगा यूनाइटेड में? I genuinely feel they need a proper DM. अभी भी तो I think Ruben Neves might just end up in United. Wolves are getting rid of players, Pedro Neto, Ruben Neves, because they have bought a Gonzalo, they have bought in Matheus Nunes. So मुझे यार माना कोई नहीं, उन्हें टाइम आउट दे दिया मैंने. I've given them a time out now. लेकिन हाँ, looks like Rabiot's mother feels is done. I mean, the shenanigans suggest something similar. हाँ, मतलब I understand that, लेकिन भाई मतलब let's be honest, people in Europe का क्या है ना, वहाँ पर ट्रांसफर वैल्यू कम होता है, बट सैलरी ज्यादा होती है. तो I can understand why they are kind of wanting that. लेकिन मैं इतना भी बोलता हूँ, even Chelsea were linked to Rabiot earlier in the window. थोड़ा लेजी जर्नलिज्म था, बिकॉज यूवेंटस हैड हिम एज अ सरप्लस, और चेल्सी को चाहिए था एक मिडफील्डर बिफोर गेटिंग लिंक टू फ्रेंकी डियोंग. तो वी वर आल्सो लिंक टू रैबियो, और द फैक्ट दैट आई थिंक टुकल हैज ही प्लेड विद रैबियो, आई थिंक एक सीजन खेला है उन्होंने शायद, जहां तक मुझे याद है. तो अगेन देयर इज सम कनेक्शन देयर. तो मैं तो बोल रहा था भाई, एज अ सब्स्टिट्यूट व्हाई नॉट, बट नॉट एज अ स्टार्टर. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए एक स्टार्टर, समवन हु स्टार्ट्स ओवर फ्रेड. So that is the main problem for them. मुझे लगता है as much as Eriksen did not do well at the weekend in the number 6 role, he will play number 6 for United. ठीक है, he will start number 6. लेकिन because of that, they need a more defensive-minded player in the CDM position. तो कौन आने वाला है? I don't see anyone coming. So maybe best solution क्या होगा अभी के लिए? Lisandro Martinez moves to CDM. I know मानव ने बोला था, काफी लोगों ने बोला था about that in pre-season times, लेकिन वही है, Lisandro Martinez wanted to play center half. I don't think it's going to work in back four. तो वो मूव होंगे in central midfield. वो है solution United के लिए, along with Eriksen and Bruno playing above him
एंड ऑन द साइड्स आपको चाहिए एक डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर, सैंचो तो ही, एक और डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर ऑन द साइड्स, और वो लगता है भाई देखते कैक्पो माइट बी एबल टू डू दैट, तो वही होने वाला है यूनाइटेड का। लेकिन सेंटर हाफ में दे नीड टू गेट Rafael Varane. As much as Rafael Varane hasn't proven in the Premier League, he needs a leader beside him. Technically, let's be honest, Harry Maguire is a leader, not a good one at that. लेकिन हाँ, Harry Maguire and Rafael Varane will probably start. वो होने वाला है. That's more realistic in my opinion. What do you think? Which team do you think will relegate? Everton नहीं यार. Everton देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, Gordon for them is crucial. Yes, he won't score you the goals, लेकिन I think he'll be very helpful in getting you that draws, which is also crucial. So I think Everton might just escape. Leeds also might just escape. I think after 2 games भी मेरा opinion हाँ थोड़ा सा बदला in terms of Brentford. Definitely, yes, I called it that Brentford is going to get relegated before the Premiership started. Yes, it's just 2 game weeks. अभी भी things might change. लेकिन या ब्रेंटफोर्ड नहीं होगी. बोर्नमथ भी ठीक ठाक लग रही है यार मेरे लिए, तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू कॉल मे बी, लेकिन बोर्नमथ बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आई वुड टेल देम दैट दे विल गेट पुल्ड बैक. फुलम में अभी भी बोलता हूं यार, एज मच एज पहला गेम वीक में किया, दे विल गेट रेलीगेटेड इन माय ओपिनियन. एंड द थर्ड टीम विल प्रोबेबली बी, आई डोंट नो, फुलम, बोर्नमथ एंड थर्ड टीम मैं सोच रहा हूँ कौन सा डालू भाई. थर्ड टीम बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग बोलिए कौन सा लग रहा है थर्ड टीम. इन माय ओपिनियन यू नो व्हाट, लीड्स को डाल देते भाई, लीड्स को डाल देते. यस डाल दिए. आई नो काफी अच्छा लग रहा है लीड्स, स्पेशली रोड्रिगो. एंड यस एफपीएल पर क्विकली आएंगे हम, लेकिन हाँ, डू यू थिंक United should try for Paredes in last minute move for a DM role? Well, I thought Paredes is moving, right? Isn't he? Paredes is moving to Juventus, right? वही है, Rabiot अगर if he's staying to Juventus, yeah, that's a good move. So maybe Rabiot if he stays with Juventus, then Paredes might be available क्योंकि यार PSG are signing a lot of players as well. तो yes, they might just go. लेकिन yeah, Paredes one more एक reason है ना Paredes का. आप देखिए Paredes with the national team भी, if I'm not wrong, he may have had some kind of link up play with Lisandro. So I think that's a good move. But I think Ruben Neves makes more sense. Yes, he's not a pure DM, लेकिन he knows the Premier League better. So that's what मैं जाऊंगा अगर if I'm a United fan. Should be happy. Will not be facing Nunes in the weekend. I mean, no offense to the guy, but he lacks Premier League physicality. Yes, Maguire will be dropped as per reports. देखते हैं भाई. I really doubt it. If he's dropping Maguire and not dropping Lisandro Martinez, it's not fair as well. As much as Maguire भी आग रहे थे, लेकिन Lisandro Martinez should be dropped first, or should be played in midfield. They want Frenkie, they should have signed Paredes. यार भाई काफी लिस्ट लंबी थी यार उनकी, लेकिन उनको प्रायोरिटाइज करने के बजाय वो फ्रेंकी पर प्रायोरिटाइज कर रहे थे, अभी भी कर रहे. एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, लेकिन दे माइट गो बैक इफ बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं फ्रेंकी. Why don't Chelsea try Dominic Calvert-Lewin from Everton? Why? Because recent season and a half में वो injured रहे. Yes, he might come at a low price, but is he reliable week in week out? हमें चाहिए एक week in week out reliable striker, क्योंकि हमारे पास बैकअप है. Broya hopefully stays and he's a good backup in my opinion. I think Maguire and Varane, Lisandro in midfield. Okay. Why don't United play Martinez as CDM and probably sign another centre back? You know what? Logic says that, bhai. Lekin they believe in Maguire. Looks like it. They believe in Maguire. They believe in Varane and Maguire partnership, hopefully, for United fans. And then maybe even Lindelof is a backup, or Lisandro Martinez can play there. तो उनके पास options है. Problem यही हो जाएंगे ना. Can Eric Ten Hag take the hard call of dropping one of Varane or Maguire for long term as well? I doubt it. इसलिए एक और सेंटर हाफ नहीं साइन करेंगे, लेकिन I think they need a pure DM, that's for sure. Leeds, yeah, Leeds मैं तो again being a Chelsea fan, yes people, Leeds का गेम है वीकेंड में, तो यार I am working on something. Hopefully I'll get you some historical videos as well. वहाँ पर Chelsea Leeds का कुछ है, तो we'll try and do something there. We'll try and talk about that. Let me try and get a Leeds fan as well on the panel. What do you think? I'm predicting Leicester. Okay. Leicester nahi yaar, they have too much quality. I don't see them relegated and all. I feel Ronaldo's move away from Old Trafford will be the trigger for Glazers to sell the straw that breaks the camel's back. Wow. हो सकता है, because उनको पैसे मिल रहे भाई रोनाल्डो से in terms of shirt sales. Good call there as always. Southampton, yeah, Southampton actually मैंने call किया था. Thanks for reminding me. Initial मेरे जो predictions थे उसमें Southampton थे. I think I'll continue with that. Yeah, Southampton. I would say Southampton, Bournemouth and Fulham. I think not Leeds. Yeah, Leeds and Everton just escape कर जाएगी. I called it about Brentford. I believe in Thomas Frank. Yes, you did, Shrey boss. Why don't Chelsea, Mudit?
Go for Cavani? Oh, nahi yaar, nahi. Again, like I said, week in week out वाला striker चाहिए हमें. Someone who can just be there available all the time. तो वैसा एक स्ट्राइकर चाहिए. मे बी आप बोलोगे जिरू वाज द बेस्ट इन दैट मैनर, बट कम ऑन, थोड़ा सा मूवमेंट भी चाहिए यार. जिरू, एज मच एज आई लव हिम, ही इज अ लैम्प पोस्ट ऑन सम डेज, एंड दैट्स अ रियलिटी वेदर वी लाइक इट और नॉट. Cavani is injury prone as well. Yeah, good point, Bupu. Hi, bro. Came after playing football. Jay Chelsea, Nikhil. Big up, bro. Up the Chelsea. बिल्कुल, बिल्कुल. Icardi नहीं, Icardi नहीं. Yes, Icardi, भाई. Talking about Icardi, he might go to Manchester United. There were talks. लेकिन I think Icardi भाई कहीं भी नहीं जा. मतलब no club who's wanting to go up or rather want a fighter in them. They want Icardi. Chelsea better take care of Casadei. That guy's a gem. Oh, thanks, Dishant. वही मैं चाहता था. Dishant is an Inter fan, by the way, people. Sign Morata. हाथ जोड़ता हूँ भाई. नो मोराटा. बाय द वे, मैं देख रहा हूँ भाई, लाइक्स अभी तक 120 लाइक्स भी नहीं हुए. कम ऑन, ये थोड़ी सी ज्यादा नाइंसाफी हो गई. आई नो मैं थोड़ा सा कम टारगेट रखता हूँ. इसका मतलब ये नहीं है आप हमेशा टारगेट से कम रखो इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट. तो लेट्स गेट टू मोर लाइक्स. मोर लाइक्स हो गए एटलीस्ट 100 जन हमें देख सकते हैं. व्हाई नॉट मैन. कम ऑन, वी आर क्लोज टू 5K सब्सक्राइबर्स एज वेल. लेट्स गेट अस देयर. हैवर्ट्स की जगह ब्रोहा ट्राई. यू नो व्हाट, काफी लोग बहुत रील बना लिए इन टर्म्स ऑफ हैवर्ट्स मिस एंड ऑल दैट. लेकिन फॉर समवन हु एक्चुअली वॉचेस एवरी सेकंड ऑफ चेल्सी ना, हैवर्ट्स हैड अ फैंटास्टिक गेम. ही हैड अ फैंटास्टिक गेम. सच में बोल रहा हूँ. ही हैड अ सुपर्ब गेम. हाँ, टेरिबल फिनिशिंग, टेरिबल, एम्बैरेसिंग. लेकिन इज ही देयर फॉर दैट? नो. सो हैवर्ट्स खेलना चाहिए. इज वन ऑफ द फ्रंट थ्री बट नॉट द नंबर 9. वी रादर हैव, मैं बोलता हूँ हार्ड कॉल ये होगा दैट मे बी यू हैव टू रोटेट हैवर्ट्स एंड माउंट. ठीक है, and you have to keep Sterling and get a proper number 9 instead. People sleeping on West Ham's disastrous start. Oh, West Ham, man, West Ham. Have they signed a player or not? Yes, I think Kerr has come to West Ham. Am I right? Kerr has come to West Ham. It's a, I think Kerr has been criticized in the past. Many bolunga he's a fantastic one. Lekin bhai, Kerr is very useful because he can play centre back as well as right back. तो यस, केरर टू वेस्ट हैम हो गया है आफ्टर दे हैव आल्सो साइंड कॉर्ने. आई नो कॉर्ने बर्नली से आ रहे आप बोलोगे, लेकिन बर्नली के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थे अप फ्रंट अलोंग विद मे बी वेगॉर्स लास्ट सीजन. तो मैं बोलता हूँ कॉर्ने वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट साइनिंग. यस, ही इज नॉट स्टार्टेड गेम्स येट, लेकिन करेंगे भाई. तो कॉर्ने हैं इन अटैक एंड दे हैव केरर नाउ. तो दे आर एडिंग अ बिग स्क्वाड. Certainly there will be outgoings वहां पर. So people are looking for players, go to West Ham. अरे Flame Boy doing better. Thanks. Always when I speak to you all, I feel better. I put it that way. It doesn't matter. You should always be available. Yeah. Advay Naik, bro. Hello. कैसे हो भाई? Chelsea fan in the house. How has Kamasa been in the starting two games for West Ham? भाई Kamasa ने hardly खेला है. He didn't start games, so I think it's difficult to kind of judge Kamasa right now, but he'll be good. Chelsea moving to do personal terms with Skriniar in case Fofana doesn't happen by Ben Jacobs. Wow, फुटबॉल टेरेस में अभी भी बोला है क्या? बिगा भाई बेन जेकब्स को. भाई स्क्रीनियर बैकअप प्लान अभी भी ऑन है. इंटर फैन दिशांत आप बोलिए. आई डोंट नो इफ अंकल शर्मा स्टिल वाचिंग अस. डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. What do you think about Skriniar? Skriniar आएंगे तो in my opinion the 3 the back is brilliant. We get experience. We don't spend more than 60 million, or we can put in some money in maybe in Aubameyang as well. Wow, that will be the best in my opinion. अगर हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन again likelihood कम लग रहा है because इंटर को नहीं मिला ब्रेमर. If I'm not wrong, Milinkovic जो डिफेंडर जा रहे थे, even he's staying back in Fiorentina. Correct me if I'm wrong, Dishant. लेकिन हाँ, plus I think abhi they are still kind of dealing with not getting a lot of other players. So I think they'll probably keep hold of Skriniar is what I feel. So वही है, Chelsea के targets are not targets which are easy to get. That's the main problem. Havertz drops so deep, helps the defense and links up the game, and we just look at the bad finishing. Yeah, बिल्कुल Shrey, exactly my point. वही है ना, मतलब कोई बंदा वही है. Shrey is one of them as well. I know that. मतलब हर एक चीज देखो आप, Havertz का नाम देखोगे, he had a fan. मतलब एक और वायरल हुई चेल्सी फैंस के बीच में एक वायरल हुई है. Havertz had a flick to Mason Mount. Didn't even see that flick. Wow. What is that flick all about, man? He had a superb kind of I think he didn't start. That's for sure. I don't know whether he played or not. यार गॉर्डन अच्छा प्लेयर है यार. आयुष काफी अच्छा प्लेयर है. Yes, he's not a finisher, he's not a goal scorer, लेकिन generally as a player I would love people who fight for their badge. I would love people like that. Gordon is superb. He brings
उसका जो एनर्जी कंटेजियस एनर्जी है, जो मेसन माउंट के का एनर्जी है, वही गैलेगर का है। तो गैलेगर, माउंट एंड गॉर्डन, वाओ, हमारे पास 3 प्लेयर से हो जाए तो बढ़िया है। यस, 50 मिलियन बहुत ज्यादा है, नो टू वेज अबाउट इट, बट अगर वो छोड़े ना एवर्टन तब रेलेगेट हो जाएगी मेरे ख्याल से। यस, बिकॉज ही कैन गेट यू अ फ्यू गोल्स एंड ही कैन बेसिकली डू वेरी गुड डिफेंसिवली एज वेल ऑन द राइट हैंड साइड। कॉन्टेनिस्ट, अरे कम ऑन यार, चिल, अभी हो जाए। सब लोग बोलो किसने दार्विन नूनेज अपनी एफपीएल टीम में लिया था। एफपीएल टीम का क्या हालचाल चल रहा है भाई मेरा, मतलब एफपीएल के तो पता नहीं यार। आई नो एफपीएल टीम मैंने नहीं किया था बिकॉज आई वाज अनवेल ड्यू टू यस्टरडे लॉट, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ। मैं दिखाऊं कि नहीं? एम्बैरसिंग भाई, मैंने तो एक्चुअली आई एक्चुअली केप्ट एज अ व्हाट यू से एन एक्स्ट्रा सब रखा है, तो आई डिड नॉट इवन मेक अ सब्स्टिट्यूशन, बट लेट मी सी, आई विल सी द सेकंड टीम व्हाट इज हैपनिंग। Okay, I'm just trying to log in, people don't tell me I've forgotten the login यहाँ पे। Okay, I think I've got it now। चलो, okay, I've it's not too bad, एक टीम तो अच्छा की है मेरी, तो I'm just trying to show my FPL team। आप लोग भी अपना बता दीजिए क्या हुआ है, और मैं लीग भी दिखा देता हूँ भाई। Yes, I've not reacted, I've not done a separate stream उसके लिए। मे बी आज रात को फीफा स्ट्रीम करेंगे ना, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे, उस पे डिटेल में बात कर लेंगे थोड़ा टाइम मिले तो। चलो, दिस इज व्हाट आई हैव डन। यस, I played Ward at the weekend. Probably not great call. James, I need to make a substitution of goalkeeper. James doing brilliantly for me. Perisic doing decent. Dinia hug diya. Van Dijk hug diya. Madison doing well. Luis Diaz doing well. Mahrez okay. Rashford hug दिया है. जेसुस और केन मेरा बचा लिया भाई, लेकिन केन को कैप्टन रख दिया भाई। आई हैड टू कीप गैब्रियल जेसुस में कैप्टन, लेकिन मैं सोचा लेस्टर डिफिकल्ट टीम होगा। यहाँ पे मेरी बेंच में देखो, किलमैन ने 7 पॉइंट्स किया और मेरे लिए कुछ पॉइंट्स नहीं लिए, वॉट एवर। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या हुआ एबीएफसी फैंटेसी लीग का। ओके, तो शाउट आउट जाता है यहाँ पे डेफिनेटली। लेट मी जस्ट ट्राई एंड मैक्सिमाइज इट अ लिटिल बिट टू शो कि कौन कितने पानी में है। सब लोग भाई रेडी हो जाओ, खुलासा हो रहा है अपने लीग का। FPL, and yes, people have not joined the FPL can still join. Link is always in the first 3 lines of the description, as the Discord server, as is the link to Almighty Sports Plus, हमारा दूसरा चैनल। ओके बिबाश भाई, काफी अच्छा कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ 2 हफ्तों से। तो हैदर अली, गुरशीत, सूर्या, शिव, अभिजीत, वाओ, आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो भाई। अजित नीचे हो गए, बट अजित गुप्ता नॉट अ गुड वीक लुक्स लाइक। एंड हु एल्स, आई एम जस्ट सीइंग इफ देयर आर एनी फेमिलियर नेम्स, और आप लोग भी है तो आप बता दो, आपकी रैंक दिख रही है तो दैट विल बी गुड। ओ माय गॉड, दिस इज लाइक वाओ। कहाँ है मैं कहाँ हूँ मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो बहुत ही दूर हूँ, देख रहे मैं। एवरीवन अगेन डू नॉट फॉरगेट टू, ओके, गुरशीत सिंह संधू इज 138, नाइस। लेट्स सी, Advait Kale, 47th rank. Okay, I know him. Almighty Sports, 213. हक दिया प्रॉपर। पहले हफ्ते में बहुत ही गंदा किया था, लेकिन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी कहाँ है, मैं वो देखना चाहता हूँ। ऑलमाइटी ब्लूज एफसी कहाँ है? आदित्य गुप्ता इन द हाउस यहाँ पे, और ईशान बद्रा 93rd नीचे आ गए भाई ईशान बद्रा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग किधर हो, कोई दिख जाओ भाई सब लोग। मैं देख रहा हूँ अखिलेश देशमुख 73rd। ओके, इंटरेस्टिंग दैट, बारसा फैन है अभी अखिलेश अपने। चिन्मय भाई अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, 65th रैंक उनका, काफी अच्छा रैंक है भाई। आपकी टीम तो अच्छी नहीं करी सच में, लेकिन आपकी एफपीएल टीम बेटर करी। अभिषेक टॉप 50 ब्रो, मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड ऑलमाइटी कोच इन फैक्ट, तो काफी अच्छा कर रही है। यस, आई विल कम टू द कमेंट्स पीपल क्विकली, मैं यहाँ पे क्विकली मैं दिखाना, शाउट आउट देना चाह रहा हूँ। आकाश रॉय 50th रैंक, वाओ दैट्स गुड यार, वेरी गुड रैंक, काफी अच्छा रैंक है। मैं ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ढूंढ रहा हूँ, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी बाहर हो गई क्या? कहा है यार? बिप्रा 142nd रैंक भाई, क्या है, क्या हो रहा है आपका बिप्रा? मेरे साथ ऑलमोस्ट। यहाँ पर मोग भाई 132 यार। मोग भाई 132 है। 132 रैंक। दिशांक राणे 131 रैंक। डगलस डगआउट फुटबॉल चैनल इज 129। ओके, एंड आई एम जस्ट सीइंग द अदर्स एज वेल। ओके ओके ओके, नाइस नाइस भाई, इतने सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ऑलमाइटी ब्लूज एफसी लगता है 150 में भी नहीं है। लेकिन आएंगे, वील कम बैक, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम कमिंग बैक विद अ प्रॉपर स्ट्रीम ऑन दैट दिस वीकेंड। पहले व्हाट इफ चेल्सी विन द प्रीमियर लीग? डैम,
बिल्कुल, you know that's what he's saying, and this is going to happen. Right, बिल्कुल बिल्कुल. Comedy sports. I know you were waiting for it. कोई नहीं. I don't play FPL regularly. Usually leave 4 to 5. You know what? मेरा टैक्टिक वही था. मैंने ना एक ट्रांसफर रोक रखा है, तो एक और ट्रांसफर मिलेगी, तो इस वीक 2 ट्रांसफर करके नेक्स्ट वीक धमाल मारेंगे अपन. देखते हैं. मेरे 50 पॉइंट्स है फुटबॉल क्रिक बोल रहे हैं. अरे भाई मेरे से मैं तो बेटर हूँ आपसे. वाओ 173. जेसुस कैप्टन. वो ये डिफरेंशियल नहीं था ना श्रेय. आपको रखना था कैप्टन. मे बी रोड्रिगो किसने लिया था भाई लीड्स के. ओके ओके अब्दुल्ला रफीक. ओके थैंक्स ब्रो. अब्दुल्ला याद था मुझे. सेकंड नेम नहीं आता. प्रेडिक्शन लीग यस. वहां पर आई एम गोइंग अपडेट वाया कमेंट. मैं यहाँ पर टोटल नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आई एम गोइंग पब्लिश इट बाय थर्सडे मॉर्निंग. ठीक है मानव. तो वहां पर यू विल गेट. यस मानव इज लीडिंग द प्रेडिक्शन लीग ऑफ द मेंबर्स, जस्ट टू लेट यू ऑल नो. ओके वाह. रोनाल्डो चेल्सी आ जाए भाई. होपफुली केशव आ जाए. बट यहाँ पर क्विकली और भी न्यूज है थोड़ा हम टच अपॉन कर लेंगे यहाँ पर विदाउट काइंड ऑफ मिसिंग आउट ऑन एनी न्यूज एज सच. भाई येरेमी पीनियो टू चेल्सी. आप लोग बोलिए. तो येरेमी पीनियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्सेनल वर आल्सो टारगेटिंग येरेमी पीनियो. He is a very good winger. He's a right-sided winger more than a left-sided winger. He plays for Villarreal. और हम लोग ने actually kind of we are expecting to play against him in the Super Cup last time. और I think he is a very tricky winger. बहुत ही young है. I think if I'm not wrong, he's 19-20 years of age. और उनका प्राइस टैग थोड़ा ज्यादा है फॉर हिज एज, कंसिडरिंग वो एक यूरोपियन प्लेयर है. 40 odd million आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा है फॉर येरेमी पीनियो. लेकिन द रीजन बीइंग दैट 50 million भी हो सकता है. आई एम टॉकिंग यूरोज. द रीजन बीइंग दैट उनका एक बायआउट क्लॉज है 67 million euros का. तो आप लोग को क्या लगता है, अगर हम लोग को नहीं मिल रहे गॉर्डन, we rather go for a tricky winger rather in Yeremy Pino? Is it too much of a risk shedding out close to 50 million euros on a unproven player in the Premier League? I think it may be just. I would rather have experience in the front three आज के दिन में. अगर हमें नहीं मिल रहा है someone who's coming from Premiership experience. That's just my call. आप लोग बोलिए. No, it's not too late. Flame Boy, please join. Definitely यार. मतलब 100 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है FPL 38 गेम्स में. तो मैंने 100 पॉइंट्स किया होगा ना फॉर एग्जांपल मेरा टोटल. तो आप आराम से लीड कर सकते हो मेरे को. तो प्लीज गो अहेड एंड जॉइन यार. मतलब कुछ भी नहीं है, सच में बोल रहा हूँ मैं. यू कैन स्कोर 100 पॉइंट्स इन विद इन 2 weeks. तो मेरा अभी 100 पॉइंट भी नहीं है. जस्ट टू लेट यू. फ्लेम बॉय प्लीज जॉइन एंड अदर्स एज वेल. प्लीज जॉइन. 273 रैंक में हूँ. हालैंड को कैप्टन रखा था. ओह माय गॉड. He's just 19. I'm a bit unsure. Yeah, मतलब वही है. 45-50 million. I don't think so. हम देना. I understand giving 20 million for a Casadei, 20 million for a Chukwuemeka, a similar amount, 15 million for Slonina. I understand those. लेकिन वही है, मतलब आप maybe you can buy someone of say experience of maybe 25 years of age, in maybe 45 to 55 million. Rather, I would go for them. नहीं यार, interest. I hope it was serious. Dishant will be happy to hear that. भाई डमफ्रीज ने बढ़िया गोल मारा था वीकेंड में. आई नो इट वाजंट ऑन हिज टिपिकल डार्टिंग रन. इट वाज ऑफ अ सेट पीस, बट इट इज व्हाट इट इज. भाई डमफ्रीज हैज दैट नैक फॉर अ गोल इन माय ओपिनियन, और हमें चाहिए वो. भाई द प्रॉब्लम इज डमफ्रीज में क्यों सीरियस नहीं होंगे, बिकॉज डमफ्रीज स्टार्ट्स इन मोस्ट टीम्स स्पेशली एट इंटर. तो यहाँ पर आई डोंट थिंक गेट लॉट ऑफ स्टार्ट्स एज मच एज रीस जेम्स वाज वेरी गुड इन राइट सेंटर बैक पोजीशन एट टाइम्स इन द वीकेंड. आई थिंक दैट ही इज मोर ऑफ अ विंग बैक और अ फुल बैक अभी के लिए. Wow, I don't think so. As much as he's a legend, he's an all-time goat almost. लेकिन I don't think so. Pace of the Premiership, having him coming in will be good as well. And yes, मैं देख रहा हूँ यार काफी लोग drop हो गए all of a sudden. भाई मतलब I understand you might have to go watch other things as well. Absolutely fine. लेकिन भाई बीच conversation में मत छोड़ा करे. थोड़ा सा discourage होता है for any content creator, not just me. But कोई नहीं. And do not forget, people, we will be hopefully live for a FIFA continuation. Hopefully we win one more Super Cup tonight on Almighty Sports Plus. Now that Aspi signed, we don't need Denzel. Adway, do you really think so? हमें चाहिए यार. मतलब Aspi, do you consider him as a good backup to Reece James? खुदा ना खास्ता अगर रीस जेम्स को वापस इंजरी हो जाती है, कैन यू कंसिडर एस्पी स्टार्टिंग? आई डोंट थिंक सो. हमें चाहिए विंग बैक हु स्टार्ट्स. Aspi in the right center back, I can still argue that he can start, not in the wing back position. That's what my opinion is. Unless हम जाते हैं 4-3-3, which with possession we went in that Tottenham game.
Yeah, so शुरुआत इसी हुई थी यार, मतलब मैन यूनाइटेड आल्सो गोइंग फॉर हिम, बट इन ऑल ऑनेस्टी आई नो इकार्डी के भी थोड़े लिंक्स थे, आई डोंट थिंक सो जाएंगे. आई थिंक दोज आर ऑल न्यूज कमिंग फ्रॉम द जर्नलिज्म व्हिच इज थिंकिंग दैट रोनाल्डो इज गोइंग टू लीव. नहीं तो नहीं होने वाला, यू नो दैट्स व्हाट दे गोइंग. नहीं तो बैकअप प्लान हो सकता है, आई डोंट थिंक जाने वाले. सेस्को नहीं है, आई नो, बट इन माय ओपिनियन मार्शियल एंड रैशफोर्ड माइट जस्ट स्टे. I bought Neves. Okay, Ashish, congratulations, भाई. Loftus Cheek. Well, एक मैच काफी अच्छा किया. I know Tuchel might just believe in that. Yeah, that might be the reality. लेकिन I still feel that Loftus Cheek का best position is number 8. He is really a number 8, a beautiful number 8 हो सकता है. If we go 4-3-3, him and Gallagher will be wow in those positions for me. विल वी ब्रिंग टीमो और नहीं, टीनो नहीं आने वाले भाई, लिवरमेंटो नहीं आने वाले, एज वेल लैम्प्टी नहीं आने वाले. आई डोंट थिंक सो. द फैक्ट इज दे वोंट स्टार्ट अभी भी. दैट इज द ओनली रीजन. ओके, व्हाई चेल्सी नॉट गोइंग फॉर पैट्रिक शिक? यार बिकॉज यार पॉगबूम बूम, एक तो नाम काफी इंटरेस्टिंग है आपका. बट डेफिनेटली यार लाइक कर दीजिए स्ट्रीम. एवरीवन डू लाइक द स्ट्रीम, हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार. होपफुली हमारा सब्सक्राइबर काउंट हैज गॉन क्लोजर टू 5K. द टारगेट वाज टू रीच 5K बाय 15th of August बाय इंडिपेंडेंस डे, लेकिन हुआ नहीं. लेकिन कम ऑन, यू गाइस कैन सर्टेनली शेयर द स्ट्रीम एंड गेट अस मोर सब्सक्रिप्शंस एज वेल. एंड अगेन, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं टू बोथ द चैनल्स, प्लीज ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. हमें सपोर्ट करिए इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस एज मच एज यू कैन, नॉट जस्ट द लाइव स्ट्रीम्स ओनली, राइट. लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आने के लिए बहुत थैंक्स यार. पैट्रिक शेक, सिंपल यही रीजन है. पैट्रिक शेक रिप्लेस्ड हैवर्ट्स एट बायर लेवरकुसेन, ठीक है. एंड सेम थिंग, हैवर्ट्स हैज कम टू प्रीमियर लीग. इज ही योर नंबर 9? नो. पैट्रिक शेक इज मोर लाइक अ नंबर 9, एब्सोल्युटली. लेकिन कमिंग फ्रॉम बुंडेसलीगा, वहां से हम वी हैड गॉट वर्नर, रिमेंबर. तो हमारा एक मेंटालिटी ये हो गई है, इफ वी गेट समवन, विल गेट समवन हु हैज प्लेड द प्रीमियर लीग और हैज एक्सपीरियंस प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग और इज जनरली वर्ल्ड क्लास. तो वही है, पैट्रिक शेक अभी नहीं पहुंचे उस लेवल तक. दैट्स द ओनली रीजन. और काफी कॉस्ट भी होगा उनका. जॉनथन डेविड का भी एग्जैक्टली सेम रीजन है. रिफात, बिग अप भाई. रिफात इज अ पीएसजी फैन, ऑफ कोर्स. पीएसजी के बारे में भाई हमने बात नहीं किया है. रिफात, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्बापे? इज इट ओवर प्रोपोर्शन? मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर प्रोपोर्शन हुआ है, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्बापे? क्या लग रहा है वहां पर? हाउ विल यू नो गैल्टियर सॉल्व द प्रॉब्लम इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम? Yeah, new 6-year contracts. Hopefully by Mason Mount, who's one of the least players आज के दिन में. लेकिन I think it deserves it. Reece James तो without a shadow of a doubt does it. And of course उन लॉकडाउन का जरूरी है, पूरी दुनिया की नजर है रीस जेम्स पर. Do you think Chelsea Pulisic to Man U? नहीं यार, I don't think so. Because remember, as much as you have a Sterling, you have a Mason Mount, I don't think they are as direct, as beautiful dribblers as a Pulisic. So Pulisic is something different. हमें चाहिए. Plus the pace of Pulisic on the far post is important at times. So he can be a brilliant impact player for me. Yes. Meslier has been contacted by MUFC. So okay, so not only basically Jan Sommer, Meslier as well. लेकिन यार, why would he go to Manchester United and be that player unless David Diaz will be a backup? I doubt it. यस पीपल कम ऑन. 150 लाइक्स नहीं हुए तो भाई पता नहीं क्या हुआ है. प्लीज, मैंने इतना बुरा तो नहीं बोला है भाई, और मैंने काफी सारे क्लब्स के बारे में बात किया है. होपफुली यू गाइस आल्सो अग्री विद माय टेक. सर्टेन लॉजिक भी लगाया मैंने. तो भाई प्लीज लेट्स लाइक द स्ट्रीम. डज सीम लाइकली लीज प्लेयर टू यूनाइटेड? नॉट हैपनिंग. डजंट सीम ओके. बॉली गिविंग आउट वेजिटेबल. आपकी जगह एमरसन ट्राई, एसपी की जगह एमरसन ट्राई हो सकता. नहीं यार, अलग प्लेयर्स है ना निखिल. देखिए, एमरसन कैन प्ले लेफ्ट सेंटर बैक और लेफ्ट विंग बैक. आई डोंट थिंक एसपी कैन डू दैट. एसपी इज मोर लाइक अ राइट सेंटर बैक और राइट विंग बैक. तो हम वी आर टॉकिंग चौक इन चीज यहाँ पर. तो हमें चाहिए एक कवर फॉर रीस जेम्स हु इज बेटर देन एसपी. सिंपली पुट. हाँ, लॉफ्टस चीक लॉन्ग टर्म अगर बना देते, अच्छा करते, प्रूव्स मी रॉन्ग, ब्रिलियंट. एक मैच में बहुत ही अच्छा किया, लेकिन हैज ही डन दैट वेल? नो, ओवरऑल नहीं. आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ मिडफील्डर. And Emerson looks like he might have to go, or he might be our left center back. Left center back का cover भी हमारे पास नहीं है, तो I think that's the point. Mbappe is just scared to see everyone adore Neymar than him in the dressing room. That's it. Simple on the match. He wasn't proper. Okay, he's a little bit mentally disturbed. Okay, Rifat, well, I would rather give him the benefit. He's a real youngster who has got a lot of pressure on him, considering what has happened in the summer. So understandable, but he should not do what he did. He should, definitely, cool it down.
Barca made so many signings, still couldn't get the win over Rayo. एक ही मैच है यार, Nutcrackers. Let's not react much. या मैंने देखा था आशीष. Thanks. भाई, but it's not a week in week out position. It's not that. It's not his position. टूकल तो कुछ भी कर सकता है. टूकल यार जादूगर है बिल्कुल. Everything is sorted after the match in dressing room. Had a conversation with both of them. चलो. And Rifat खुद ही बात किए लग रहा है. The way the comment is coming, but I know I just a funny joke. Luis Campos, Galtier, Neymar, Mbappe had a meeting and they are sorting everything. Interesting that, huh? तो भाई लुइस कैंपोस, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने जो बोला है. अब देखते हैं भाई, व्हाटएवर हैपेंस दे हैव टू सॉर्ट इट आउट. इतना इन्वेस्टमेंट किया है, दे हैव टू सॉर्ट आउट मिस्टर एम्बापे. और यहाँ पे वापस से मेरी गले की खराश शुरू हो गई है. ये देखो, ये क्या, मेरे ये अलग ही न्यूज आ रही भाई. रूमर फैल रहे यहाँ पे चैनल पे लाइव. कुछ भी मतलब. अंकित भाई, थॉट्स ऑन एंटनी गॉर्डन बिल्ड. यार अनिकेत, मैंने काफी बता दिया ऑलरेडी. आई फील ही इज ओवर प्राइस्ड और एवर्टन नहीं चाह रही दे, बिकॉज ही वाज आल्सो आई थिंक कोटेड बाय न्यूकासल, और न्यूकासल को मना कर दिए, लेकिन चेल्सी को मना नहीं कर पाए बिकॉज चेल्सी है. तो और गॉर्डन ने इच्छा जाहिर की होगी थोड़ा, तो लेकिन 50 मिलियन बढ़ा दिया. तो यार बढ़िया प्लेयर है. मे बी अगर 40 मिलियन में आ जाओ तो वो तो 100%. 50 मिलियन rather get a more experienced player, I would say. Oh my God, Adve. I didn't go to catch up on Mbappe, Neymar. Can you give me a recap? Okay. So basically what happened is, again, there are a lot of rumors also. जो मैंने देखा है, देखो दो तीन चीजें हैं. एक तो जब मैच चल रहा था ना वीकेंड में, तो Mbappe was making runs like Timo Werner used to make for Chelsea, or no one used to give a F, and that was what was happening. So what is happening is, at one point Mbappe भाई थक गया कि भाई जा, भाड़ में जा. और मतलब दिखाया नहीं, बट he kind of stopped running. He just started walking towards the side, or he was almost off the pitch. Yes, there was a moment. तो वहां पर he was like, अगर इनको पास करना ही नहीं तो भाई हूँ क्यों मैं टीम में. तो ये चीज होता है. लेट्स बी रियल, हम लोग सब खेलते हैं फुटबॉल क्रिकेट. हम लोग सब टीनेजर्स रहे हुए, हम लोग सब 20s में भी रहे हुए, मैं तो बोलूंगा ऐसे. लेकिन at some point you have that feeling, bhai, what is it man, these guys are ganging up against me. That is what वो feeling आ रही थी, in between the lines. वही समझ में आता है. और as a youngster you feel that, as someone who's a little bit immature, you feel that at times. और मे बी रियल में हो रहा है. दैट इज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट. अच्छा, सेकेंड चीज ये है, ड्रिंक्स ब्रेक हुई थी. तो ड्रिंक्स ब्रेक में पानी पी रहे थे सब लोग, और सब लोग पीएसजी प्लेयर्स साइड में आ गए थे, पानी पी रहे थे. एम्बापे, सॉरी, नेमार और मेसी साथ में एज ऑलवेज. और वहां पर एम्बापे अब अकेले जाकर सेंटर लाइन में वेट कर रहे बॉल के लिए, मैच शुरू होने के लिए. तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नहीं, ही वाज ट्राइंग टू गेट अ बेटर गेम एंड गेट हिज फोकस बैक इन द गेम, और दैट्स व्हाई ही वेंट बैक अर्ली. एक स्कूल ऑफ थॉट इज नहीं, ही डजंट वांट टू मिंगल विद देम. तो देयर इज अ लॉट ऑफ इट. देयर इज अ थर्ड स्टोरी. This I don't agree, because मैंने देखा नहीं अपने आंखों से, that in between the game there was a slight push to Messi. I don't agree that has happened. Correct me if I'm wrong. देखते हैं भाई, गैल्टियर अच्छा कर रही है इस बार. बाय मानव, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है. मैंने शायद बताया भी था लास्ट स्ट्रीम में मैंने बताया था. देखिए, द फैक्ट कि नूनेज नहीं रहेंगे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट, और हम डिटेल में बात करेंगे टैक्टिकली इन द वीकेंड प्रीव्यू जब हम करने वाले कल. देखिए, नूनेज इज अ प्लेयर जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सेंट्रल रोड, राइट. और ही इज नॉट अ फर्मिनो जो ड्रॉप करते इतना. यस, ही इज अ फॉक्स इन द बॉक्स मोर. तो वहां पर क्या हो रहा है, साला इज नॉट एबल टू गेट टू द सेंट्रल रोल मच, जो ही लाइक्स डूइंग इन बिटवीन द गेम्स, especially with Mane not being there. Or the fact is, I mean, Nunez will not be there. He might get that opportunity to do that. तो इसीलिए मे बी बिकॉज टू अकोमोडेट नूनेज एंड मे बी नॉट टू हैव दैट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द ऑपोजिशन, जो पिछले में previous years Mane used to do at times, Firmino used to do at times, Salah has got to do that, because Luis Diaz also does not do that as much. as वो डिफेंसिवली अच्छा है, but he is more like a wing play. तो वहीं पर साला को ड्रॉप करना पड़ रहा है. मानव इज एब्सोल्युटली राइट. Yeah, Campos is sporting director, and basically it is what is him? Galtier is the coach. Luis Campos doesn't appreciate Mbappe on-field behavior and Neymar social media things. Okay. अरे बर्थडे तो नहीं है यार आज मेरा, अनूप, कोई नहीं.
Newcastle bid for only 25 to 30 million. Okay. That's why maybe, huh? Okay. ओके डेफिनेटली भाई ओम बात करते हैं। कैसे करोगे आप? इंस्टा में मुझे डीएम करिए, मे बी आई कॉल यू देयर, वी कैन डू दैट। अर्ली टू से व्हाट बट इट इज अ सीजन वेयर जाओ फिलिक्स विल क्लिक। वाओ, यू नो व्हाट, मैं तो बोलता हूँ एटलेटिको मैड्रिड विल क्लिक। आप सुनिए मेरा बात, एटलेटिको मैड्रिड विल एटलीस्ट चैलेंज। हाँ, टॉप टू नहीं जाएगी लेकिन चैलेंज डेफिनेटली करेगी। दे हैव अ क्रेजी स्क्वाड। अगर मोराटा स्कोर्स इज गोल्स ना, आई एम टेलिंग यू दे विल डू देयर जॉब। Sergio Ramos had a word for Neymar and oh, interesting. Wow. Yeah, सच है तो भाई, big up to Sergio Ramos. ओके अरे मेरा भी 20 चल रहा है, आशीष बोल रहे हैं। नाइस नाइस, चलो ओम का शायद डीएम आ गया, करता है भाई ओम आपसे बात करता हूँ as soon as I'm free. PSG trying to curb Mbappe too much too quickly if they I don't know about curb. यार इतना कर्व तो नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज दे नो दैट एम्बापे, एज मच एज यू डोंट वांट हिम गोइंग, एज मच एज ही इज एक्सपेंसिव, देयर विल बी टेकर्स यार फॉर एम्बापे। ओके oh my god, Nikhil strong with that. भाई come on, let's hear मानव। भाई मानव बता रहे हैं भाई, मानव also knows his stuff inside out, so he's recommending, pretty sure आप लोग मेरा नहीं सुन रहे हो तो बाकी मानव तो सुन लो यार एटलीस्ट। एंड मेसी का भी भाई, मेसी नो प्रॉब्लम, बिग लव ब्रो। ऑफ कोर्स मेसी इज आल्सो अ मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। Yeah, they need to be counseled for sure, Adwe. I understand वो लोग, they cannot behave in a certain manner doing what they are। इसलिए मैं काफी बार बोलता हूँ, certain times even as content creators we have some responsibility, we need to be as in kind of saying the right things, because things might be understood the wrong way, and that's a reality of it। and वो लोग तो भाई they are at that level, absolutely। Will Oba fit in our system? Yes, he fits in our system much more than maybe a Ronaldo, but I want Ronaldo. Simple as that. As much as Oba, and many people, I don't want Oba, but Ronaldo is a better finisher, or he brings little bit less baggage in terms of bad baggage. He brings a lot of publicity, which we don't need either. लेकिन हाँ, अब क्या कर सकते हैं भाई, beggars are not choosers. We don't have many options, do we, in the transfer market? We need someone experienced who can finish, और ज़्यादा we were not interested in Depay, as much as I said that he could be a good fit as well. लेकिन we didn't do anything there. Mbappe to Newcastle United, नहीं यार, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है एनी टाइम सून। बट अगेन मैन, पीपल ऑल, मच लव टू यू। काफी सारे न्यूज हमने शेयर किया आज भाई, मतलब काफी दिनों बाद हम कर रहे हैं, आई नो, प्रॉपर स्ट्रीम जहां पर हम खाली ट्रांसफर्स के बारे में बात किए हैं एंड सर्टेन न्यूज, बीट एलॉन मस्क, और ऑफ कोर्स बाय द वे न्यूकासल की बात से याद आया मेसी। जाओ पेड्रो टू न्यूकासल लुक्स लाइकली, वो लग रहा है माइटी। हाँ, पहला बिड शायद खुश नहीं है फॉर वॉटफोर्ड, लेकिन आई थिंक दे विल गो फॉर जाओ पेड्रो। सो अगेन दे वांट प्रीमियर लीग प्रोन प्लेयर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज दे वांट टू गो टू मिड टेबल कंसिस्टेंटली। चलो देखते हैं, मिलान स्क्रीनियर टू पीएसजी, अब देखते हैं वापस से शुरू हो जाएगा पीएसजी और चेल्सी के बीच में वॉर। देखते हैं, अगर मिलान स्क्रीनियर गोस टू पीएसजी, किम्पेम्बे माइट जस्ट बी अवेलेबल नाउ, जस्ट सेइंग। या वही है, टैक्टिक्स, यू राइट, दैट्स द रीजन मैं टॉप टू में नहीं बोल रहा हूँ। सिमियोने इज स्टिल देयर, जस्ट लाइक यूवेंटस एंड एलेग्री यार, टू सम एक्सटेंट। लेट्स सी। नहीं यार, मतलब बरेया, निको बरेया इज नॉट द परफेक्ट रिप्लेसमेंट। It's not easy to replace Bernardo Silva. The guy can play everywhere, anywhere in the front six. That's what it is. Chelsea Blues, thanks for coming on again. Do not forget to like the stream. And yes, we are going to be live more constantly now. Again, last 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. Hopefully, with all your love, we will also kind of be on Almighty Sports Plus. We'll be live. कितने बजे होंगे भाई? वही 10:30 बजे या 11:15 बजे we'll be live on Almighty Sports Plus with a FIFA stream. Yes, we are going to definitely bring Super Cup to the home again, but we are also going to do a lot more over the week. We are going to do Who Am I on Friday, और कल हम करेंगे प्रीमियर लीग के बारे में बात, और maybe other leagues as well for the weekend matches. बड़े matches है, we'll try and get a panel. If not, you always have me. Again, much love to everyone who's been here, especially shout out to all the people who are moderating the chat, and of course the members. लेकिन ये भूलिए मत, we are monetized, so if you can super chat, if you feel that we deserve it, it will go back to the channel to upgrade the channel every bit. So right, और मिलते हैं भाई 11:15 बजे मिलते हैं on Almighty Sports Plus hopefully, and chill stream वही है, हम FIFA stream chill ही रहती है आज क्या भाई, मतलब much love, do not forget to like the stream, और thanks a lot. Chelsea, come on, let's go over the line and do some transfers. The Manchester United fans, be patient, don't worry. Barca, Man City, you're good. नहीं हो transfers will be good. चलो, take care, bye, much love.